Meena was having custody of the gold articles, and Saurabh Khare was sales manager, and Pawan Sen was relationship manager. Full stop. Prosecution has failed to point out the specific role of applicant in embezzlement of gold articles, or or his specific role in grant of loans or checking of articles, jewelries. Full stop. Considering aforesaid circumstances, application is allowed. Applicant be released on bail 50,000, 1 lakh 1 surety. Investigating officer. Number 15. There is not available. Case diary called after 1 week. Notice. Notice after 2 weeks. Notice to respondent number 2. Number To 16. Superintendent of Police. Counsel for applicant pays for adjournment after 1 week. Number 17. At the repeat bail application 14A of scheduled caste and blood type segment. Person dismissal withdrawn, my lord. Find some documents that is one of both, There is order of first application. my lord. That is page number 9, my lord. Annexure 8. It was withdrawn. Yes, my lord. Yes, बताइए क्या है merit में? Our statement has been accepted. We have filed the on the part. This is what you are in jail. Yes, my lord. He is changed. Where is he? Declared hostile. सही है ना? Sanction everything. Yes. That these three people are from all W of Lachi and Kim. Yes. Gaurav Gabbar. Gaurav and Kappa. Look, these two have been granted bail, but Lachi kindly have not paragraph 5. Yes. That means the applicants. Applicant will not a broker. One of the two. And will not it was. Recovery has been. And will not is. So only mobile phone is found from you. By Danda, not and that part is concerned, the trial court will not decide. And which has not been identified. Identification. Or will not
ये मोबाइल फोन किसका है जो इनसे मिला है? मोबाइल फोन जो चीज है उसका था, ये राज के पास से जो जब्ती हुई है मतलब राजपाल डांगी द्वारा घर के अंदर से Who has व्यक्ति के identified कपड़े, this? ये मोबाइल फोन इसमें मोबाइल का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बट मान लो जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी ये है कि जिस समय ये ढाबे के अंदर था अपने, तो ये अपने एक मित्र राजेंद्र से राजपूत से बात कर रहा था। उस दौरान ये लोग सब इकट्ठे पहुंचे हैं वहां पर और उसके साथ में मारपीट करना चालू कर दिए। उस दौरान इसका मोबाइल चालू था, तो उस जो राजेंद्र ने जो थी वो मारपीट की सारी बातों को उसने जो है वो सुना है। फिर बाद में जो है इनके पास से जो है इनके द्वारा मारपीट करके उसको वो अपने ढाबे के अंदर कमरे में जैसे ही घुसा है तो इनने मारा पीटा। फिर ये अपना जब चले आए सोच के कि ये मर गया है, तो उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाद में दरवाजा तोड़ करके इसको जब निकाला है दूसरे दिन, तब ये सारी स्टेटमेंट राजेंद्र के स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा हमारे इसमें। घटना ढाबे के अंदर जयपाल डागी चलाता है। जयपाल डागी स्वयं भाजपा का कार्यकर्ता, हमेशा मित्रों के साथ दुर्गानगर मुलाकात आया था। एक बार जयपाल ढाबे में बैठकर चुनावी चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा था इसलिए वह कार्यक्रम कम थे, परंतु जयपाल द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी देकर चुनाव पर 1-2 बार की बातचीत हुई, सामान्य बातचीत होती थी। घटना दिनांक को 1/12/2023 को करीब 9:30 बजे 9:31 बजे जयपाल के फोन मेरे पास आया। 25 से 30 मिनट तक बात होती रही, जिसमें परसों चुनाव गणना के लिए रायसेन चलना यह बोला था। अंदर गुटखा वगैरह नहीं ले जाने देते इसलिए बाहर से ही रहूंगा, मेरी सामान्य बात ही थी। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि उस पर हमला होने वाला है। उस दौरान बातचीत से कोई बात नहीं हुई, तभी अचानक बातचीत में मुझे लगा कि कुछ झगड़ा मारपीट जैसा हो रहा है, परंतु साफ सुनाई दे रहा था। मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। कुत्ते भौंकने की भी आवाज आ रही थी, परंतु जयपाल की आवाज आना बंद हो गई थी, लेकिन मोबाइल चल रहा था। तभी मोबाइल से मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी, कुछ बातचीत सुनाई दी। मैंने अपने मोबाइल में जितनी बातचीत रिकॉर्ड हो सकी थी कर ली थी। दोबारा लगाने का प्रयास किया लेकिन मोबाइल बंद हो गया था। 9:30 बजे करीब 29 मिनट तक मेरा मोबाइल जयपाल के मोबाइल से कनेक्ट था। आखिर 6 मिनट की रिकॉर्डिंग केवल जयपाल के मोबाइल के पास ना होकर किसी के पास, अन्यथा दूसरे दिन 10 बजे दुर्गापाल से मुझे फोन में बताया कि जयपाल की हत्या हो गई। ये जो मोबाइल रिकॉर्डिंग है, इसको स्टडी करने के बाद में पुलिस के द्वारा इन लोगों को अरेस्ट किया था कि ये आवाज इन लोगों की करके। फिर इन लोगों ने अपने मेमोरेंडम में ये बताया कि इस तरह की घटना इनके द्वारा कारित नहीं, तो इनके नाम तो लिए नहीं गए, इसने कुछ नहीं सुना है। एक आवाज को लेकर के जो है बातचीत से मुझे लगा जैसे झगड़ा और मारपीट हो रही है, पर कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मतलब ये मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी, दैट्स ऑल। ऐसा इसने नहीं सुना कि आपस में नाम ले रहे हो कि मारो या और कुछ सुना। ये इसको क्लियर कर। अच्छा, घटना जब हुई है उसके पहले जो है लास्ट सीन टुगेदर जो है, इनको 2 लोगों ने गाड़ी से डंडे लेकर के वहां जाते हुए देखा है ढाबे की तरफ जो है। 164 के उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। ढाबे की तरफ? यस मतलब मैं उस ढाबे में जाते नहीं देखा। हाँ, मैं 164 के स्टेटमेंट उनका पढ़ देता था। इनकी सेलन डागी का स्टेटमेंट है। वो आइडेंटिफाइड द वॉइस ना फाइनल रिपोर्ट to identify that voice, वो छोटू का 161 पूरे 161 कौन है? छोटू सचेंद्र, छोटू डांगी। ये 164 सौरभ डागी का स्टेटमेंट है। हम 5 भाई हैं, छोटा भाई राज है, इसको स्कूल का नाम राजपाल भी है। दिनांक 1/12/2023 को 9 बजे करीब खुरई के अपने खेत में था, तब खेत के बाजू से चिल्ला चोट की आवाज आ रही थी। वहां पर पहुंचा तो राजेंद्र ने मुझे बोले, तुम्हारा छोटा भाई राज लाठी लेकर ग्राम सुनहरा झगड़ा करने गया, तुम जाकर उसे लौटा लाओ, झगड़ा मत करने देना। मैं वहां पर मोटरसाइकिल के देखते देखते ग्राम सुनहरा रोड गब्बर गौरव थे, तीनों मोटरसाइकिल से रोड पर जा रहे, तीनों हाथ में डंडे लिए थे। मैंने दोनों डंडों में खून लगा देखा था, मैंने डरकर वापस खेत में आकर के सो गया। दूसरा राजेंद्र ठाकुर के स्टेटमेंट में गया, एक
11/2023 को 9 बजे सौरभ को भाई राजेश खेत में गया था, मैंने डंडा रखा था, डंडा लेकर जाने लगा तो मैंने पूछा डंडा लेकर के कहाँ जा रहे, तो कहने लगा कि फिर मैंने उसके भाई सौरभ बोला तुम्हारा भाई राज डंडा लेकर गया है, उसे रोको, किसी से झगड़ा ना करे। तो सौरभ राज को देखने गया, फिर वापस नहीं आया। ये जिस समय जा रहे थे लास्ट सीन टुगेदर के, और ये तो एक जो है सौरभ डांगी, ये तो कह रहा है कि उसने तीनों के हाथ में डंडे देखे, 2 डंडों में खून लगा देखा था। एफएसएल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इनको कुछ पता नहीं है, इनका कोई पर्सनल रिलेशनशिप भी था, ये भी कुछ कह रहे हैं छोटू डांगी किसी काजल से। अच्छा, और इसके पहले भी इनके साथ में विवाद हुए हैं, ऐसे स्टेटमेंट उनके फादर के और दूसरे लोगों के। ये शराब बेचने के ऊपर से विवाद था, ये अपने अपने इलाकों में शराब बेचते रहे, बोले तुम हमारे इलाके में शराब नहीं बेचोगे, ऐसा करके जो है पहले भी इनके उस बात को लेकर के विवाद हुए हैं। देयर इज नो एविडेंस एट ऑल, फादर के स्टेटमेंट में है। और ये जो पीएम रिपोर्ट है इसमें दीज वुंड्स आर इंसाइज्ड, और इनसे डंडे की जब्ती करी है आपने। माइलट Applicant has filed first application under section 439 police station offences. Learned counsel appearing for applicant submitted that applicant is innocent and has falsely been implicated in the case. Only evidence available against him is circumstantial evidence. Full stop. It is submitted that applicant is young man aged about 20 years. Full stop. Stick, mobile phone and motorcycle is said to have been seized from the applicant. Full stop. In post-mortem report, injuries found on body of deceased are incised wound. Full stop. ये ब्लड स्टेन है, ह्यूमन ब्लड है इसमें लाठी में। एफएसएल रिपोर्ट के लिए कोई आई नहीं इसमें। खून लगा हुआ है, आया है, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट आई नहीं। सो ब्लड स्टेन लाठी आपके पास कहाँ से आ रही है? So it is recovered from an open place. मैदान में आरोपी के खेत की ढेर। After 9 days, At your राजपाल का जो मेमोरेंडम है, इसी के खेत से it is submitted that recovery of stick has been made from open place. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. राजपाल का जो मेमोरेंडम है, Yes. मोटरसाइकिल ढाबे जा रहे थे, मोटरसाइकिल मैंने घर के पीछे छुपाई, जयपाल का मोबाइल जिसको फेंका तो मोटरसाइकिल मोबाइल खेत में छुपा करके, डंडा घर पर छुपा करके, और कपड़े और मोटरसाइकिल चल करके बरामद कर दी। घर में तो उन्होंने छिपाया ही नहीं है, ऐसा दिया इनका। देखिए इनका सीजर मैम, राजपाल का कहाँ से सीजर है? जो डंडा आपने घर से रिकवर किया वो दूसरे एक्यूज का है। राज का जो है स्टेटमेंट, राज दागी का जो है, इनका सीजर देखिए ना। यस माइलर, मैं पढ़ रहा हूँ, ये घर के अंदर से आ रहा है, ये गलत। एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। यस, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। यस, यस, application is dismissed. Number 19. Counsel for applicant pays for withdrawal allowed. Dismissed. Number 19. Yes. Yes. हाँ, क्या है 9 में? सारंग। यह स्टेट इनके अगेंस्ट में क्या है? मानव इनके द्वारा साथ में मां ने बताया है, मृतक की गाड़ी दीपक सैनी मना करने और चारों आरोपी द्वारा एक राय होकर दीपक सैनी को मां बहन की गंदी गालियां देके लात घूंसे से मारपीट करने चोटें आई थी। मृतक दीपक सैनी
16/6/2023 So को there was applicable- no dangerous weapon. Applicants has filed first application 439 police station offences. Counsel appearing for applicants submitted that co-accused in the case, namely one Sarang Singh Chandel, was released on bail. Case of applicant is similar. On date of incident, applicant was not armed with any dangerous weapon. Assault is said to have been made by hands and fists. Applicant does not have any intention to cause murder. Full stop. Government advocate opposed. Heard the counsel for the parties. Applicant is in jail since 30/6/23. Investigation is complete. Charge sheet has been filed. Co-accused is released on bail. Case of applicant is on parity. Considering aforesaid circumstance, application is allowed. Applicant be released on bail 50,000. नहीं नहीं ये first है मैं बता I'll consider it. I'll pass order. Yes, yes. Yes, yes. ये इसकी डायरी दे दीजिए. बट Yes. I'll consider. Yes, that I have read. Yes. Number 20. Gary is not available in this case, man.
after 1 week. Yes. Counsel for applicant prays for adjournment after 1 week. Number 23. Permission. As prayed adjourned after 1 week. Number 24. क्या है ऑफेंसेस क्या है? 307 है. आप लोग कौन है? बिल्कुल तो similar। आपने राजीनामा कर लिया है? आपका राजीनामा हो गया है? नहीं तो आप क्या फाइल करना चाहते हैं? क्या फाइल करना चाहते हैं आप? इसमें सर सिमिलर को एक्यूज देवेंद्र, ये उसकी बेल एप्लीकेशन रिपीट बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी सर, उसमें लिबर्टी दी है आफ्टर 6 मंथ ट्रायल कंप्लीट करने के लिए। क्या है क्वेरी रिपोर्ट? क्या है इंजरीज क्या है? यस इनका रिकॉर्ड है कोई रानू का? ये सुंदरलाल का स्टेटमेंट भी पढ़ दीजिए। हाँ, इनका रिकॉर्ड भी है सर, इनका रिकॉर्ड है 7 केसों का। 7 केसेस का। और application is dismissed. Applicant is at liberty to file repeat application after examination of complainant in court. उनका हो जाने दीजिए एग्जामिनेशन, फिर देखेंगे आप। आपके 7 केसेस हैं। ये तो डर के मारे गवाही नहीं देंगे आपसे। डर के मारे वाली बात है। 307 है सीरियस ऑफेंसेस। डेंजरस टू लाइफ है, डेंजरस टू लाइफ। 2 लोगों को चोट है, दोनों को सिर पे। Yes, dismissed. Next. Counsel for applicant prays for withdrawal of bail application with liberty to file repeat application after examination of complainant. Prayer is allowed. हाँ तो ठीक है, देखेंगे 6 महीने बाद। आप भी आइएगा, देवेंद्र की होगी तो आपको भी दे देंगे। नंबर 24। हॉस्टाइल है, इसमें डायरी, हॉस्टाइल है। इस डायरी नहीं, Case diary called after 1 week. आपने फाइल की है स्टेटमेंट्स? Annexure A3. Yes, state. Applicant has filed first application, police station offences. नहीं हॉस्टाइल तो नहीं हो रही। पेज नंबर 13 में जो पैरा 1 देखा था, इसी में इसने बोला है। नहीं, थर्ड में उसको डिक्लेयर किया है। थर्ड में किया, लेकिन उसके पहले उसने बोला है कि वहां गए थे, वहां शराब मिली। बाद में पैरा 1 देख। Yes, yes. साक्षी द्वारा दिसंबर की तारीख अपने हाथ साक्षी के हाथ का समय 12 साक्षी का आचरण उचित नहीं। Applicant क्या लिखा है? Repeat application under section 439 police station offences. It is submitted that
liberty was granted to applicant to file repeat application after examination of independent witnesses. After examination of witnesses of Caesar, said witness has been examined. Independent witness is hostile and other witness is partly hostile. Full stop. Now there is no chances that applicant will be able to influence the witness or tamper with evidence. Government advocate opposed and submitted that witnesses are not hostile. Heard the counsel for the parties. Applicant is in jail since 3/12/23. Considering the period of custody and fact that material witness has been examined, application is allowed on condition. Applicant will mark his presence before local police station once every month. Will not, if found involved, prosecution at liberty. कितना टाइम हो गया आपको? यह स्टेट नो सीरियस ऑफेंसेस 326 326 नहीं है, नहीं, बाद में आया सर 326। 26 जुड़ गया है। हाँ कहाँ पे है फ्रैक्चर? सर मल्टीपल हेमरेजिक कंट्यूजन ऑफ राइट फ्रंटल पैराइटल रीजन। कंट्यूजन है। हाँ फ्रैक्चर भी है सर। कहाँ पे है? ये फ्रंटल बोन में है सर। डिस्प्लेड फ्रैक्चर ऑफ राइट फ्रंटल बोन। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। ये तो सीरियस है। आप डिस्प्लेस्ड है मतलब बहुत फोर्स से मारा। इनका रिकॉर्ड कितना है? रिकॉर्ड भी है सर। रिकॉर्ड भी है जी, 2 केसों का सर, इसको मिला के 2। एक 2022 का है 323, 324। Applicant is at liberty to file repeat application after a period of 6 months or after examination of complainant in court, whichever is earlier. तभी उसमें फ्रैक्चर नहीं था ना, ये तो सीरियस ऑफेंस है आपका। बाद में 326। इसमें देखिए मेंशन नहीं है, आपने एप्लीकेशन में भी नहीं लिखा है क्या? हाँ दैट्स व्हाई, इसलिए तो आपको बोला कि 3 महीने बाद दे देंगे चालान पेश होने के बाद, बट 326 इज एडेड। आपका रिकॉर्ड भी है क्रिमिनल रिकॉर्ड। यस, सिर्फ एक ही है। हाँ इसके अलावा एक 2022 का है। ये इनिशियली 326 क्यों नहीं बना जब डिप्रेस फ्रैक्चर था? तो बाद में रिपोर्ट आई सर। नहीं तो उसमें रिपोर्ट की क्या जरूरत है? डिस्प्लेस फ्रैक्चर तो सीरियस होगा, वैसे ही दिख जाएगा एक्सरे रिपोर्ट में। डॉक्यूमेंट सर हॉस्पिटल में एडमिट था, बाद में डॉक्यूमेंट मिले तब ये लगाया। यस, नेक्स्ट। आफ्टर 3 months और एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। 26 फर्स्ट टाइम है। मैंने फर्स्ट बेल एप्लीकेशन 1 नवंबर को विड्रॉ किया था। यस, पेज 7 पे 17 पे। यस, क्या एलिगेशन इनके अगेंस्ट? सर एलिगेशन तो है सर, लेकिन इसमें बात हुई थी और ये व्यक्ति की नाम था एफआईआर में इसकी विड्रॉ की थी, फाइल कर रहे थे आपने विड्रॉ। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में आपने जो ऑर्डर किया, जिसके 2 महीने बाद सामने ऑर्डर है, तो मानते हुए सबकी सिमिलर मान के बिल ला दी, उसका हमने कैंसिल आप हो सकते हैं ट्रायल कोर्ट के सर आपके सामने आएंगे। बिल्कुल यानी क्लियर एफआईआर नाम सब स्टेटमेंट पर नाम है, इंजरी है, मतलब जब बेल आपने दी सब जब उनकी हो जाएगी कैंसिल तब आएंगे। हमारा तो सेम केस है मतलब काइंडली बी सीन पेज 26 मतलब। ये इनका फर्स्ट डे में ही नाम था। हाँ सर, फर्स्ट डे में दूसरे जिनके फर्स्ट डे में थे उनकी बेल हुई है। 3 लोगों की बेल। 5 लोगों के ऊपर है सर जो नेम्ड एफआईआर है। हाँ, किसके नाम में? इसमें कुसु, राजेंद्र, संतोष, गोलू और सुरेंद्र। कुसु, राजेंद्र,
संतोष, गोलू और सुरेंद्र, ये नेम्ड है सर। बाकी गोलू एंड सुरेंद्र। अब इसमें महिला राजेंद्र की बेल हो गई, संतोष की हो गई, गोलू की हो गई, तीन लोगों की बेल हो गई। राजेंद्र की हो गई है, जी, संतोष की और गोलू की। गोलू की। और पुस्सू ने लगाई नहीं बेल। भाई ट्रायल कोर्ट सर आपने नहीं दी। यस, सिमिलर जिसकी बेल दी सब में 2 महीने बाद स्टेटमेंट में उनकी बेल दी सर आपने। मतलब हम हर हफ्ते थाने में पेश हो जाएंगे, जिनकी बेल हो गई है। आपका रिकॉर्ड भी है क्या? नहीं, रिकॉर्ड कुछ नहीं है महिला हमारा, केवल एक सर केस तो सर एफआईआर नाम स्टेटमेंट में इंजरी सर 302 है सर, और आप हीनियस ऑफेंस है। महिला जिनकी बेल हो चुकी है, सेम केस है हमारा। तो बाद में नाम जोड़ा इसमें एफआईआर में देखे महिला हमारा बाद में नाम जोड़ा गया है, सुरेंद्र सिंह लोधी। और जिन लोगों ने बयान ये दिए, स्टेट इनका नाम है क्या? इसमें नाम है, और मैं पढ़ दूंगा एफआईआर। हाँ, एफआईआर पढ़ी। मैं हरदुआ में रहता हूँ, खेती किसानी करता हूँ। दिनांक 21/4/23 को रात करीब 8-9 बजे दस्सू के साथ i20 कार में दवाई लेने सहपुरा जा रहे थे। हमारे साथ दस्सू के अलावा राम प्रताप लोधी, महेंद्र सिंह लोधी थे तथा वैन में मुकेश प्रधान भी सामान लेने अपनी गाड़ी से जा रहा था। जैसे ही पिपरिया के कटीला के बीच बरिया के पेड़ के पास पहुंचे, हम सभी गाड़ी रोककर पेशाब करने लगे। पीछे पिपरिया तरफ से एक सफेद गाड़ी, एक अल्टो में पुस्सू लोधी, राजेंद्र लोधी, संतोष बच्चा, गोलू लोधी और सुरेंद्र लोधी भीटा तथा इनके साथी आए और गाड़ी में दस्सू की कार में टक्कर मार दी और सभी गाड़ियों से उतरकर दस्सू तथा हम लोगों को लाठी डंडा व राड से मारने लगे। मेरे दाहिने पैर की पुडरी, बाएं पैर की कलाई में चोट आई। राम प्रताप को कमर में तथा दाहिने पैर में चोट आई थी। हम लोग वहां से भाग गए। दस्सू वहीं छूट गया था, फिर गिर गया था। हम लोग हरदुआ जाकर दस्सू के पिता पदम सिंह को बताए। कुछ देर बाद एफआईआर डेट बताइए। एफआईआर 21/4 की घटना है, 22/4 की एफआईआर। 8:30 सुबेरे हाँ। 21 की घटना रात की घटना है 9 बजे की, सुबह 8:30 बजे की। और 29 तारीख को गवाह हुए इनके, और बाकी के गवाह नेम्ड इन द एफआईआर इमीडिएटली। महिला इनमें जिनके नाम लिखे हुए हैं 3 लोगों के, ये आप देखेंगे मतलब पुस्सू लोधी, राजेंद्र लोधी, संतोष बब्बा और गोली लोधी, सभी निवासी पिपरिया। इनकी सबकी जमानत हो गई। पुस्सू भर के ने अभी लगाई नहीं हाई कोर्ट में। ये गोलू की हो गई है, गोलू की हो गई, राजेंद्र और संतोष की हो गई। ऑर्डर बताइए किस महिला पेज 20 पेज 20 रीजनिंग तो देख लें उनकी। ये 32 है, 32 पेज 32 के लास्ट पैरा में आरोपी पुस्सू उर्फ पुष्पेंद्र की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र बल न देने के कारण नष्ट किया जाता है एवं मामले की अभिदर्शित उपरोक्त समस्त तथ्य परिस्थितियों कार्यत अभियोजन अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर किसी टीका के बिना ही मामले में आरोपी संतोष उर्फ बब्बा, गोलू उर्फ नारायण, राजेंद्र सिंह की इन्होंने तो रीजनिंग ही नहीं दी है। अनरीजन्ड ऑर्डर है बेल का, ट्रायल कोर्ट का रीजन दिया है। कौन है ये जज साहब? माइला रीजन दिया है, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, रीजन दिया है इसने। क्या है रीजन? मतलब इसमें इन्होंने एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने पहले जो मृतक था उसने गोली चलाई और दोनों को इंजॉयर हुए, और जिसको गोली लगी है उसकी ये जमानत दी है। उन्होंने ये लिखा है इसमें कि जिसने गोली चलाई थी। हमारी भी एफआईआर है, हमने एफआईआर पेश की है महिला। 307 की एफआईआर उन लोगों के खिलाफ है, काउंटर केस है। वो काउंटर केस में ही उन्होंने मान के ये बेल दी। सारी घटना उनको मालूम है। इस केस में महिला थाना बेलखेड़ा में एफआईआर दर्ज हुई। घटना में जो 4 साक्षी थे, इनके 29 तारीख को गवाह लिए गए। उसके बाद 2 महीने बाद फिर बेलखेड़ा से वो थाना भेड़ाघाट ट्रांसफर किया गया, और तो भेड़ाघाट पुलिस ने सारे बयान लिए और फिर सबको मुलजिम बनाया। और जिनको मुलजिम बनाया इन्होंने, उनमें सारे लोगों की बेल हो गई।
केवल पुष्पु और कृष्णा और प्रेजेंट एप्लीकांट का बाद में नाम जोड़ा है उन्होंने। कहीं ऐसा है ही नहीं सर। जो बाद ये में आपका तो एफआईआर में ही नाम है ना, बाद में कहाँ जुड़ा है? एफआईआर में हमारा नाम है, मगर जिनकी बेल हुई है उनके भी एफआईआर में नाम है। तुमको ऐसा नहीं गलत है दे दी ना बेल। उनकी जिनकी बेल हुई है उनके भी सारे लोगों के। Applicant has filed second application under section 439 police station offences. Learned counsel appearing for applicant submitted that आफ्टर ये वीक रखने ये टाइम मांग रहे हैं तो other co-accused persons, namely Santosh, My lord, I withdraw this application. counsel for applicant prays for withdrawal allowed dismissed.
प्रेजेंट एप्लीकेंट इज रमेश माय लॉर्ड। जो भी पदार्थ इसमें जब्त किए जाना बताया गया उस अंडर मीडियम क्वांटिटी है। सम्मानित ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसके लास्ट पैरा में उन्होंने लिखा है कि ये कॉमर्शियल क्वांटिटी में है। आपका चेंज बताइए, व्हाट इज जी चेंज इन सर्कमस्टेंस? सेकंड थर्ड दोनों मेरिट नहीं जी फर्स्ट वाली थी शायद, आप देखेंगे सर। नो फर्स्ट चेंज। वाली विड्रॉ, सेकंड वाली मेरिट पे डिसाइडेड है, लेकिन ये केस अंडर इसमें सेक्शन 37 की बार लागू नहीं होती है कि मीडियम क्वांटिटी का केस है। जैसा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा, ये जो अनुसूची दी गई शेड्यूल, इस शेड्यूल के पैराग्राफ नंबर 110 के अनुसार पॉपी स्ट्रा की जो कॉमर्शियल मात्रा है वो 50 किलो से ऊपर है माय लॉर्ड, और हमारा जो केस है वो 1000 ग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में है। और इस केस में जो पदार्थ डोडा जो जब्त किया गया है 45 किलोग्राम जब्त किया गया अंडर मीडियम क्वांटिटी। और इसके अलावा माय लॉर्ड ये जो हमारा केस फाइल्ड रिपीट एप्लीकेशन, माय लॉर्ड मेरी देयर इज नो चेंज इन सर्कमस्टेंस। थोड़ा सा सुन प्लीज, 3 ग्राउंड है मेरे, बहुत मेहनत की मैंने, प्लीज मेरी प्रार्थना है। माय लॉर्ड जो नेक्स्ट हमारा कंटेंशन है कि ये सब कंसिडर हो चुके हैं जी, नहीं कोई नया है तो बताइए। नया है माय लॉर्ड। हाँ बताइए क्या है। माय लॉर्ड जो सेक्शन 18 है सर, उसके अनुसार ये जो इसमें पेड़ पौधे जब्त किए गए हैं ये ना तो मीडियम क्वांटिटी में आते हैं, ना कॉमर्शियल में, और ना ही स्मॉल क्वांटिटी में। ये धारा गा से संचालित होती है, धारा 18 की गा। उसमें लिखा है कि अन्य मामलों में सश्रम कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी एवं अर्थदंड जो 1 लाख रुपए तक विस्तारित हो सकेगा। तो ये जो मामला है माय लॉर्ड, ये मीडियम क्वांटिटी का मामला है, और मीडियम क्वांटिटी की दशा में इस केस में 2 आरोपी की जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। एनडीपी और उनसे जो क्योंकि मीडियम क्वांटिटी में आपकी ऑनर कोर्ट में जो 2 आरोपी अन्य आरोपीगण हैं उनसे अफीम पकड़ी गई थी, 110 ग्राम अफीम और 1 से 140 ग्राम अफीम, वो उनका मीडियम क्वांटिटी का केस था, और वैसे ही हमारा भी मीडियम क्वांटिटी का केस है। तो ये इसमें पैरिटी का सिद्धांत लागू हो रहा है। मेरी प्रार्थना ये है, और दूसरी प्रार्थना ये है कि जिस जमीन पे आप भाई साहब ने बताया है कि ये जमीन हमारी है, उससे हमारी जमीन नहीं है और उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज उन्होंने पेश नहीं किए हैं, और वो जो जमीन है अगर ये उसकी वही पेश कर देते या उसका कोई राजस्व संबंधी अभिलेख पेश कर देते तो वो प्रूफ माना जाता एज पर चालान माय लॉर्ड। चालान के अनुसार एक भी दस्तावेज उन्होंने पेश नहीं किया है कि वो जमीन जो है किस व्यक्ति की है, बस पंचनामा बना दिया है। ये स्टेट, ये जमीन किसकी है? पोजीशन पटवारी ने कुछ दिया है? सब तो कंसीडर हो चुका हमारा। खसरा नंबर बिलोंग्स टू दी अपीलेंट, और इनको कल्टीवेशन के लिए वकील को और वसंती लाल दी थी जमीन, उनकी जमानत इनका पहले यस गलती हो सर, उनसे 110 ग्राम अफीम और 140 ग्राम अफीम इनके मेमोरेंडम पे फिर आया कि जो जमीन हमें खसरा पे इन दोनों ने दी थी, के खसरा है, इनने इनको दी थी और ये उनसे खरीदती थी। तब जाके इनके मेमोरेंडम के ऊपर से सर्च में ये 1 कुंटल 25 रमेश से आया और 2 कुंटल इससे दूसरे। नो चेंज इन सर्कमस्टेंस। माय लॉर्ड 1 साल हो गया माय लॉर्ड, और अभी तक एक भी गवाह नहीं। ट्रायल कोर्ट इज डायरेक्टेड टू एक्सपेडाइट द ट्रायल एंड कंप्लीट इट विद इन फर्दर पीरियड ऑफ 1 year. हाईली उलाइट Madam, appearing in the matter for the first time, a few rectifications have to be done as per Lordship's order. Yes. Lordship are kind enough to give me 3 days time. I'll do the rectification. Learned senior counsel appearing for applicant pays for time for correction, for making correction in memo of application. Prayer is allowed after 1 week. Grateful manage. Yes. My lord, charge sheet has been filed. Today we will receive it. Therefore, I request to list this matter after a week. आप कौन है? यस एप्लीकेंट, आप लोग कौन है? रुपेंद्र कौन है? हैं? हस्बैंड है? रूपेंद्र जो हस्बैंड में कुछ है इनका बिल के लायक? क्या है पढ़िए।
स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ मालक। यस, फादर का स्टेटमेंट पढ़ दीजिए। कोमल का, फादर का मालक। यस, डायरेक्ट एलिगेशन है नहीं है। हाँ, वेयर इज योर सीनियर? My senior is busy in another court. एडजॉर्न पहले भी है क्या एडजॉर्नमेंट? नहीं, एक बार पहले लिया 13/3/24 का है। लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। पढ़िए क्या है। मालक, उपस्थिति पर बताया मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, खेती किसानी का काम करता हूँ। मेरे एक लड़का और एक लड़की का नाम नैन्सी है। नैन्सी इज डिसीज मालक, यस, जिसकी शादी 9 मई 2022 को ग्राम नंदिया में रविंद्र सिंह अंधेरे के लड़का रूपेंद्र सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की। शादी में मैंने अपनी स्वेच्छा से दान दहेज दिया था। शादी के बाद मेरी लड़की मेरे यहाँ पर 4-5 बार आई। आज कुछ समय मेरी बच्ची अपनी ससुराल से ठीक से रही। उसके बाद लड़की जब भी हमारे यहाँ आती थी, मुझे तथा मेरी पत्नी और परिवार के अन्य लोगों को बताती थी कि मेरी ससुराल में मेरा पति रूपेंद्र सिंह, ससुर रविंद्र सिंह और बबलू राजा कहते हैं तुम मायके से 3 लाख रुपए और लाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने शादी में कम दान दहेज दिया। ससुराल जाकर सास ससुर लेकिन ये लोग 3 लाख रुपए ले आओ, तभी तुम्हारी बच्ची को अच्छे से रखेंगे। बच्ची जब भी हमारे यहाँ आती थी, ससुराल वाले पक्ष के पति से दहेज में 3 लाख रुपयों के लिए उसे प्रताड़ित एवं परेशान करना और उसके साथ आए दिन मारपीट करना बताती। 28/11/23 इंसिडेंट के की सुबह करीब 9 बजे मेरी बच्ची का फोन मेरे पास आया। ये इंसिडेंट डेट इज 28 है माला, सेम डे। यस, इंसिडेंट डेट इज 28/11 की मालूम, इसमें हैंग किया है माला। अट्ठाईस 11/23 की बात है। सुबह 9 बजे मेरी बच्ची का फोन मेरे पास आया, जिसने बताया कि पापा जी आज फिर से मेरी ससुराल के पति रूपेंद्र सिंह applicant has filed first मारपीट application, कर रहे हैं। police तब मैंने station कहा, offences. Counsel for applicant submitted that applicant is innocent and has falsely been implicated. Government advocate as well as counsel appearing for objector oppose the application. It is submitted that on date of incident, deceased has called his father and informed him that applicant is beating him in relation to demand of dowry. Considering the statement of father, Komal, application is dismissed. Yes, bunch of cases pending before some court martial. list along with. लिख के दीजिए. लॉर्डशिप इसमें चार्जशीट कल लग रही है तो इसको नहीं. Yes, list along with. After 1 week. सारे इकट्ठे लगे। Yes. सारे इकट्ठे लगे हुए हैं कई. Number 32. Hello. This is a first bail application under section 4. क्या एलिगेशन है आपके ऊपर? मान लो हमारे ऊपर एलिगेशन है 27,484 रुपये हमने डिपॉजिट नहीं किए। किसके? समूह में जो लोन बढ़ता है वो हमने उसको कलेक्ट करके शाखा में सबमिट नहीं किया। कर दीजिए डिपॉजिट। तो इसमें कोई एक्यूज्ड की बेल ग्रांट हुई है। मान लो ये लड़का अंदर है और जो फादर है वो ड्राइवर है, तो कैपेसिटी नहीं है। स्टेटमेंट बैंक मैनेजर यदि आप सबके खिलाफ एलिगेशन, यदि माय लॉर्ड कुछ समझे तो 50% माय लॉर्ड हम। यस, क्या है स्टेटमेंट? आप जो है ना पूछताछ पर बताया कि इंडियन सेंट्रल बैंक शाखा तिगांव रोड शंकरपुर किराए से मकान में स्थित बैंक का ब्रांच मैनेजर करीब 15 माह से कार्यरत हूँ। हमारी भारत फाइनेंशियल बैंक की संस्था है, तो मुख्यालय हैदराबाद, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई। हमारी शाखा संबंधित को समूह लघु उद्योग करने हेतु, रोजगार करने हेतु, स्वावलंबी बनाने हेतु
CIG ज्वाइंट लायबिलिटी वर्ग के सूक्ष्म ऋण वितरण कार्य करती है। महिलाओं से निम्न ब्याज पर सुविधा अनुसार साप्ताहिक रूप से किस्त वापसी लेती है। किस्त नगद राशि व RD नगद राशि वसूल करने से पंजीकृत संगम मैनेजर फील्ड स्टाफ किस्त वसूली करने जाते हैं। बैंक स्टाफ रहते हैं जो समूहों से बैंक जब जिसमें कलेक्शन अपडेट करते हैं। डिपॉजिट 50%। मतलब ये क्लियर नहीं बता रहे हैं हमारे ये वास्तव में बताया है। वसूली कर कुल राशि 90,000 रुपए में से जमा नहीं किया है। बैंक की धोखाधड़ी का नुकसान पहुंचा है। उन व्यक्तियों के द्वारा 32 महिलाओं को एक्यूज का पढ़ रहे हैं। जस्ट अ मिनट। को एक्यूज का 32 महिलाओं से 46 लोगों पर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार राशि 5,91,123 में से 2,39,215 रुपए जमा किए। 1,51,908 रुपए उक्त तीनों व्यक्तियों के द्वारा गबन किया गया। शेष राशि जमा करने के लिए कहा गया परंतु जमा नहीं किया। एक बार पंजीकरण कितना है? 3,51,908 391 जी। 392 कर लेते हैं राउंड फिगर में। 3 लोग हैं। इसको आगे पढ़े मालूट, हमारे ऊपर केवल 27,000 का एलिगेशन। नहीं मालूट, वो जो ये बाद में तीनों के खिलाफ है। पूरी अपडेट नहीं था, ये बाद में अपडेट हुआ है पूरी 32 महिलाओं का। पहले 7 महिलाओं के खिलाफ था और 32 महिलाओं के जब ये आया मालूट अनेक्जेरेटू जो एक्यूज की बेल हुई है मालूट, हाँ उसमें अंतर ये है मालूट जिनके खिलाफ सेम नेचर के ऑफेंस 2 है। क्रिमिनल क्राइम नंबर 551-23 मालूट परासिया में है 420-400 से सेम नेचर का, और खंडवा में क्राइम नंबर 934-23 का ये भी सेम नेचर का है हमारा। और ये जेल में ऑलरेडी बंद थे, इनको प्रोडक्शन वारंट से इसमें आए और इनके खिलाफ मालूट परासिया से बेल ग्रांट हुई है हमको। इसमें हम बंद और सेम नेचर के खंडवा में अभी प्रोटेक्शन पे लिया नहीं है हमको पुलिस ने मालूट। Applicant has filed first application 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant innocent and falsely implicated in the case. One of the co-accused is released on bail. Namely one Nitesh. Government advocate opposed the application for grant of bail. It is submitted that applicant is having 3 criminal antecedents of including this 3. 3 criminal cases are registered against applicant. All offences are of similar nature. Applicant is habitual offender and is cheating with public at large. Full stop. In this case also, women of self-help group has been cheated and their money has not been deposited. Heard the counsel for the parties considering criminal antecedent of applicant. Application is dismissed. मालूट मेरा निवेदन कार करें मालूट, को एक्यूज की बेल हुई और मालूट परासिया वाले में हमको सेशन कोर्ट से बेल हुई। 1 लाख रुपए आप जमा कर दें, टोटल 3 लाख का एलिगेशन है मालूट। हमारे ऊपर 27,000 का एलिगेशन है। 27,000 का एलिगेशन मालूट। को एक्यूज की बेल हुई उसमें भी why he will inform wrongly. आप बता दीजिए कहाँ है 27,000, अंडरलाइन करके दीजिए। बैंक मैनेजर का स्टेटमेंट मालूट ये इम्प्यूम ऑर्डर की एजेंसी है ये जो वसूल करती है। मालूट ये जो इम्प्यूम ऑर्डर है मालूट, इसी में ये इम्प्यून ऑर्डर अपने पास रख लीजिए। एविडेंस बताइए कहाँ है एविडेंस? चार्जशीट में कहाँ किसका स्टेटमेंट है कि आपने 27,000 रुपए किए हैं? इसमें डिसमिस्ड। यस नेक्स्ट। मालूट कंडीशनल दे दीजिए मालूट। नो कंडीशनल कर दीजिए मालूट, मेरा निवेदन है मालूट। नेक्स्ट। मैं कर देता हूँ मालूट। आप पहले डिपॉजिट करके आइए फिर देखेंगे आपका। यस मालूट हम्बली प्रेयर मालूट, उसको आप डिपॉजिट करके आइए ना, आ जाइए, आपको दे देंगे बिल। 1 लाख रुपए जमा करवाइए। यस नेक्स्ट कौन है? मालूट क्या ये डायरी हम देख सकते? Cost of 5,000 is imposed upon the counsel and he is repeatedly arguing the case despite his bail being rejected. I'm sorry. नहीं मत पढ़िए। यस
5,000 डिपॉजिट और करिए आप. Yes. I'm sorry, my lord. My lord, this is the third bail application under section 439. Yes. First was dismissed in want of prosecution and second was withdrawn. Yes. My lord, date of arrest is old man. Charge sheet has been filed. कब से हैं? 13/3/23. जी. 1 year. Yes, state. What is age of prosecutrix? My lord, it's matter related to 420. ये पुष्पेंद्र है ना? No, my lord. लक्ष्मी नारायण. Lakshmi Narayan. लक्ष्मी नारायण. Yes. क्या है इनके अगेंस्ट? बात आगे बता देता हूँ माला. Yes. 3 आरोपी हैं इसमें, गिरिराज पांडे, दीपक शर्मा, यज्ञ प्रसाद शर्मा. Yes. और इनका आपराधिक रिकॉर्ड है 2 केस सेम नेचर के के खिलाफ, और 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं. सिर्फ ये भर अरेस्ट हुए हैं, इसलिए ये पूरा अभी इनकम्प्लीट है माला. करीब 45 लोगों के खिलाफ है. ये बाकी लोगों का प्रूफ ये 3 से होना है. ये तीनों एब्सकॉन्डिंग है अभी. इनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हो गई. यज्ञ प्रसाद, इनके अगेंस्ट चार्जशीट ये 173(8) में चार्जशीट, क्योंकि 60 दिन पूरे हो रहे थे तो इसकी भरी. कितना एलिगेशन है? मैं पढ़ देता हूँ माला. यस. सब मैं लक्ष्मी नारायण नामदेव, लखनऊ पुलिस के सामने बिना डरो बिना आवेदन लेखन कार्य करता हूँ. 2010 में जी लाइफ इंडिया डेवलपमेंट एंड कॉलोनाइजर लिमिटेड कंपनी जब उसी एजेंट समय में से एजेंट के रूप में काम करने लगा. कंपनी का डायरेक्टर गिरिराज पांडे, आनंदीलाल पांडे कचनारिया और डायरेक्टर दीपक शर्मा थे. गिरिराज पांडे और दीपक शर्मा दोनों कंपनियों की इंदौर ब्रांच कंचन सागर पैलेस ओल्ड परासिया में बैठती थी. जो लाइफ इंडिया डेवलपमेंट एंड कॉलोनाइजर लिमिटेड कंपनी ग्रुप में 7 कंपनियां थी, जो कि जी लाइफ इंडिया डेवलपमेंट एंड कॉलोनाइजर लिमिटेड 7 के नाम है मराठ. और इन प्लान कंपनी निवेशकों में पैसा जमा कराती. समय अवधि पूर्ण होने पर उन्हें ज्यादा पैसा वापस करने का लालच देती थी. कंपनी एजेंटों के माध्यम से निवेश हुए पैसों को रियल एस्टेट एवं कार्य निवेश करती थी. मैं कंपनी में यज्ञ प्रसाद शर्मा और भगवान दास शर्मा निवासी खदरा के अधीन काम करता था. यज्ञ प्रसाद शर्मा के नाम पर कंपनी ने बिहार में राजगढ़ के पास निवेशकों के पैसे जमीन खरीदी. ये प्रत्येक पॉलिसी में निवेश हुए पैसों का 2% मिलता था. मैं निवेशकों को पॉलिसी खोलते समय अपने अधीनस्थ एजेंट बनाते समय फॉर्म भरता था, जिसे मैं गुना कंपनी की ऑफिस में जमा कर देता था, जहां से कंपनी उन फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों को इंदौर ब्रांच भेजती थी. मैंने सागर में पूजा अहरबार, उमेश कुमार, बबलू पारासर, रश्मि पारासर, बासु के कंपनी में निवेश किए थे. इन 6 के तो इधर है हमारा करीब 45 लोगों के पैसों का केस. पूजा अहरबार से 30,000 रुपये 5 साल की पॉलिसी के तौर पर जमा करवाया. उमेश से 30,000. तो कंपनी के लिए काम करते हैं, कमीशन एजेंट हैं. एजेंट है हमारा, लेकिन पूरा पैसा वसूल के तो इसी के खिलाफ एलिगेशन. पैसा तो कंपनी के पास है ना. नहीं जाता है हमारे 2% में इतना गलत काम तो कमीशन मिलता है. अच्छा, दूसरा एजेंट इनके खिलाफ इम्प्यून ऑर्डर में 2 लाख से 2 क्रिमिनल केस पेंडिंग बने. वो भी सेम होगा, किसी के और डिपॉजिट कराए होंगे. एप्लीकेंट हैज फाइल्ड third application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is neither owner nor director of the company. He is merely a commission agent. He had deposited the money in the company. Full stop. Applicant does not have any role in embezzlement or cheating. He only gets commission on investment made by customers. Yes. खिलाफ जो केस हमारा कोतवाली गुना में 683, 420, 417, 418, 66, 120, ताजन 461 मध्य प्रदेश. ये सब तो इसी में बना हुआ ना. राहतगढ़ में है. दूसरा केस applicant is in jail since 13/3/23. For government advocate opposed the application for grant of bail and submitted that applicant is a repeat offender. 3 cases are registered against him. Heard the counsel for the parties, applicant is only a commission agent who is getting commission
uh, commission on deposit of money in who gets commission on investment made by customers in company. Full stop. Applicant is in jail since 13/3/23 for about 1 year. Full stop. Investigation is complete and charge sheet has been filed. Considering aforesaid circumstance, application is allowed. 50,000 one surety. Obliged. Yes.
Lord, I want to withdraw. Trial is concluded and applicant is convicted. Counsel for applicant for withdrawal. Dismissed. Application is withdrawn. In this case, a issue is involved for the juvenile board order, my lord. So I am simply sought for a week's time to argue the matter with the Counsel for applicant pays for time of 1 week. first week of April. After 1 week आएगा छुट्टी के बाद. 37. Yes. Application for suspension. Then first application for suspension. There are two applications, 37 and 30. Yes. Well, I am appearing for accused Babulal Malons. Yes. On the last, the Lordship had called for the custody report of the appellant's Malons. कितना टाइम हो गया आप? 4 years actual sentence हो गया. 4 years. Yes. The maximum sentence is of 10 years. The Lordship may see 10 months. 30% हो गया. 30% हो गया. 3 years 10 months. Lordship, and 8 days. 3rd of March. 3rd of March. They are in jail since 23rd April 2020. 23rd April 2020. 20. about 4 years हो गए. About 4 years. That is what I submitted. Sudden dispute arose Malons between the parties. आपका कोई रिकॉर्ड है? There's no record. Yes. Honorable Court has convicted them under section 304 part 2, relying on a judgment of the Supreme Court, and then that the maximum sentence awarded was 6 years. That was the basis for holding them. That is the basis for. Appellant has filed this appeal against judgment dated so and so. Appellants are convicted and sentenced for period of 10 years. Full stop. Counsel appearing for appellant submitted that appellants has spent substantive part of sentence in jail. They are in jail for about last 4 years. Full stop. There is no likelihood of hearing of appeal in near future. Appeal is of 2022. There is no other conviction or criminal record of appellants. और कोई record तो नहीं है ना? No. Government advocate appearing for state opposed the application and submitted that trial court has rightly convicted the appellant. Full stop. Heard the counsel for the parties considering the period of incarceration. Application for suspension of sentences allowed. Appellants be released on bail. 50,000. See. Number 38. This is first application for grant of suspension of sentence. The appellant has been convicted under section 363, 366, 376, 2 and 5 of POCSO. He is in custody since 1911-2019. That is more than 4
provisional number is 2208, 40.1. साथ में सुन लेते जैसा आफ्टर 1 वीक फर्स्ट वीक का लॉर्डशिप इसमें स्टेटमेंट की कॉपी नहीं, 2 वीक विटनेस स्टेटमेंट हमारे पास 2 वीक्स Number 41. 75. withdraw appeal. आई Counsel appearing for appellant prays for withdrawal of IA 5147 of 24. Prayer is allowed. Application is dismissed as withdrawn. Number 42.
20, my lord. आपका कन्विक्शन कितने टाइम का हुआ है? 4 year, my lord. 4 years. My lord. ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, हारी हैं, एक बाईपैर से अपाहिज है, और जो दूसरी अपीलांट है वो लेडी है, वो इसकी व्हील चेयर को धकेलती है और ये भीख मांगते हैं शहर शहर जाकर। ये परमानेंट धंधा, और ये अहमदाबाद से भीख मांगते मांगते ट्रेन में जबलपुर आ गए। ये एड्रेस तो आपने बांग्लादेश लिखा बांग्लादेश का दिया हुआ है, बिल्कुल सर, क्योंकि इन्होंने जो प्रोसिक्यूशन का केस दिया कि हम बांग्लादेश के रहने वाले हैं। हमने जो क्या डॉक्यूमेंट फाइल किए आपने अपना बर्थ वगैरह शो करने के लिए इंडिया में? इंडिया में सर ये इनका प्रोसिक्यूशन का ही एक मटेरियल जो है इन्होंने जो फाइल किया है उसी में आया कि हम भीख मांग। अरे आपने क्या डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं कि आप यहाँ इंडिया में पैदा हुए हैं? नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट तो हमारे पास नहीं है, तो क्योंकि अब ये दोनों के दोनों किसी ने गवाही भी नहीं दी कि आपको जानते हैं, आप यहाँ पे सर हिंदुस्तान में एक जन्म हुआ? विटनेस है इसमें जिसको उन्होंने इन्फॉर्म किया था एट द टाइम ऑफ द अरेस्टिंग दी बोथ द अपीलांट्स, माय लॉर्ड, यस, बट दैट विटनेस नॉट एग्जामिन्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। तो आपने क्या प्रूव किया, कुछ किया है आपने, कोई डॉक्यूमेंट बताया आप यहीं के रहने वाले हैं? अब सर ये दोनों जेल में हैं। आप किस ग्राउंड पे असेल कर रहे हैं जजमेंट को? सर मैं काइंडली सी नेचर A2, माय लॉर्ड। A2, A2, yes, page number 28. yes. They have seek advice by the legal advisor, and page number 29, my lord. आप जजमेंट बताइए कि क्यों गलत है ट्रायल कोर्ट का जजमेंट, किस ग्राउंड पे आपको सस्पेंशन चाहिए? My lord, other witnesses, independent witness, not support the case of the prosecution. Only the police किसने witness, सपोर्ट नहीं किया बताइए? PW3, my lord. PW2 Akbar Qureshi, Yes, just a minute. my lord. किस पे रिलाई कर रहे हैं? Another witness, my lord, PW. पढ़ के तो बताइए My क्या lord. बोला है उसने, My क्यों ट्रायल कोर्ट ने उसको? चीफ पढ़ रहा हूँ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण मोहम्मद मैसूर शेख व मीनारा बेगम को नहीं जानता हूँ। मेरे सामने आरोपीगण को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। अभियुक्त मैसूर शेख की गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शित पी के आशय आभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, प्रदर्शित P2 के आशय आभाग पर मेरे हस्ताक्षर अवश्य हैं। पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरे कथन नहीं लिए थे, देन हॉस्टाइल किया है सर। उसके बाद भी पूछा है, कहना गलत है कि दिनांक 5/4/2023 को मैं थाना गोरखपुर की पुलिस के साथ महर्षि स्कूल के बाजू में ग्राउंड पर गया था। वहां पर आरोपीगण से पुलिस ने मेरे सामने पूछताछ की थी। ये कहना गलत है कि उन्होंने स्वयं को बांग्लादेशी होना नागरिक बताया था तथा पास वीजा व पासपोर्ट न होना बताया। कहना गलत है कि पुलिस ने इसी कारण उन्हें मेरे सामने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शित P1 P2 पर मेरे सामने बनाया था, जिसे पढ़कर मैंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। कहना गलत है कि मैंने पुलिस को प्रदर्शित P3 का अंश भाग मैं आज दिनांक ... मेरे द्वारा समक्ष की गई है पढ़कर सुनाए जाने पर ऐसा कथन पुलिस को ना दिया जाना व्यक्त किया है। कहना गलत है कि मैं आरोपीगण को बचाने के लिए आज असत्य कथन कर रहा हूँ। देन माय लॉर्ड, अनदर विटनेस PW3, माय लॉर्ड, गणेश बारी। आपका कन्विक्शन कौन से सेक्शन में है? 14B, माय लॉर्ड। मैम, Approximately 1 year has been completed, my lord, in jail. 14B Foreigners Act 1946 नहीं है क्या? आप लाए हैं एक्ट? सर मैं लिखा रहा हूँ लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑफिस में छूट गया। माइनर एक्ट में है क्या?
ट्रायल चला है, चार्जशीट वाज फाइल्ड। OTP में तो पेनल पासपोर्ट का extend to 10. यस माय लॉर्ड। ये एप्लीकेंट को आपको ही प्रूव करना है कि आप कौन से देश के हैं। एक्ट ये बोलता है बर्डन इज ऑन यू टू प्रूव। प्रोसिक्यूशन के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। आपने क्या प्रूव किया है? डिफेंस में एक एप्लीकेशन लगा था 227 का एट द टाइम ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। क्या लगाया था भाई? आपने कैसे प्रूव किया है कि आप इंडिया के नेशनल हैं? सर इंडिया का जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली वो है नहीं हमारे पास, क्योंकि बेकार ही 10 जगह आना जाना होता, कहीं ना कहीं मिस हो गया वो। ये स्टेट व्हाट इज बेसिस ऑफ कन्विक्शन? My lord, PW6 यस है और PW1 may kindly see para 9 of the judgment one. यस PW1 सुजीत त्रिपाठी आरक्षक हैं। अपने मुख्यपरीक्षण में बता दें कि थाना गोरखपुर में आरक्षक के पद पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण मसूर शेख व मीनारा बेगम को दिनांक 5/4/2023 से तब से जानता है जब इन्हें महर्षि स्कूल गोरखपुर के बाजू से खाली ग्राउंड से पकड़ा था। उक्त दिनांक को वह थाने पर पेट्रोलिंग ड्यूटी पर था। तभी थाना गोरखपुर पहुंचकर ड्यूटी अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक SK विश्वकर्मा व महिला उपनिरीक्षक संध्या पटेल के साथ वे थाना आरक्षक दीपक मिश्रा, आरक्षक रत्नेश राय, चीता मोबाइल के दिनेश गुर्जर, प्रदीप दुबे व संजय गोस्वामी को तलब कर इलाके में जुर्म जयराम पतासाजी का हेतु रवाना हुए। इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि महर्षि स्कूल के बाजू के ग्राउंड पर 2 विदेशी नागरिक जिसमें एक पुरुष व महिला अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर घूम रहे हैं। इस सूचना पर राहगीर गणेश बारी व अकबर कुरैशी को तलब कर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मौके पर पहुंचे, जहां पर एक महिला व पुरुष बैठे मिले, जिनसे नाम व पता पूछे जाने पर मैदान में बैठे व्यक्तियों में पुरुष ने अपना परिचय मोहम्मद मसूर पिता अब्दुल आलिम उम्र 38 वर्ष निवासी बांग्लादेश होना बताया तथा महिला ने अपना परिचय मीनारा बेगम निवासी बांग्लादेश बताया था। उनसे पासपोर्ट व वीसा के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा पासपोर्ट व वीसा तथा भारतीय पहचान पत्र न होना बताया गया। तब सहायक परीक्षक और उप निरीक्षक शिव कुमार विश्वकर्मा व संध्या पटेल द्वारा उनकी गिरफ्तारी। कितना टाइम हो गया आपको जेल में? लगभग 1 साल हो गए, 15 दिन बाकी 1 साल। मैक्सिमम 4 years to का 8 years। 4 years की पेनल्टी है। RI for 4 years है। माय लॉर्ड। तो व्हाट विल बी डन? इसमें सर जो क्या करते हैं इनको बेल पे जाने के बाद? जी सर।
यहीं रहेंगे, यहीं भीख मांगते रहेंगे बेल अब सर छूटने नया के बाद, एक्ट भी लागू हो गया है, या वापस चले जाएंगे आप? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया एक्ट भी लागू किया, तो अभी कहाँ लागू किया है? तो अभी ये आप लोगों के लिए ही तो लागू हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी उस पे कोई आपके पास पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, कौन सी कंट्री का है, कुछ भी नहीं पता है। डिफिकल्टी ये है कि इसकी जो वाइफ है वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, पेपर वगैरह होंगे भी अहमदाबाद में जहाँ रहते हैं इन लोग, वहाँ से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। इसमें Yes. हमने एक एप्लीकेशन लगाया था कि आप वहाँ से वेरीफाई कर लीजिए अहमदाबाद से कोर्ट बिलो इसको आप देख के आइए। इफ ही इज रिलीज्ड ऑन बेल, व्हाट एक्शन विल बी टेकन? इनको वापस भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, ये ट्रायल में कैसे रहेंगे, आप कहाँ ट्रायल रहेंगे? तो कंक्लूड हो गया, ट्रायल तो कंक्लूड हो गया, बाकी सेंटेंस तो अगर आपका वो सर हम कन्विक्शन अपहेल्ड हो जाता है लगभग देन जन्म से ही हम यहाँ पर हैं, अहमदाबाद में रह रहे थे, इससे पहले हम वेस्ट बंगाल में रह रहे थे, वहाँ भी हम भीख ही मांगते। तो आपने कोई एक भी विटनेस नहीं लेके आए आप? सर अब ऐसी परिस्थिति है कि भीख मांगने वाले के लिए गवाही आप देने कहाँ रहेंगे जाके? आपका कौन देगा? अहमदाबाद का हमने एड्रेस परमानेंट आपकी जो एड्रेस जमानत कौन देगा? परमानेंट जो एड्रेस हमने मेंशन किया वो अहमदाबाद का। इफ यू आर ग्रांटेड बेल, आपकी जमानत कौन देगा? किसी न किसी को अरेंज करेंगे फिर, अरेंज ये करेंगे? वहाँ से आपको कोई अहमदाबाद जानता से नहीं है। अहमदाबाद से लोकल सिक्योरिटी बुलवा लेंगे अहमदाबाद का। आपको किसने इंस्ट्रक्शन दिया है? मांगने वाले की जो है लोकल सिक्योरिटी वहाँ से बुलाकर सर वहीं के हैं तो वहीं के रहने वाले हैं तो वहीं से बुलवाना पड़ेगा, यहाँ से तो कोई देगा भिखारी टाइप के बता रहे हैं कि जन्म से भीख मांगते चले। आप तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन है आपकी, कौन देगा जमानत, कौन भरेगा? आप नहीं आएंगे तो कौन कोर्ट में पैसा? ये जो मीनारा है इनके दामाद रहते हैं हैदराबाद में सर। ये बेटी दामाद वाले भी हो गए तो भीख मांग। हाँ तो आपको जस्ट अ मिनट, आपको इंस्ट्रक्शन किसने दिया ये फाइल करने के लिए? अपीलेंट्स ने सर, और इनकी एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड का एफिडेविट लगा हुआ फाइल किया है। यस, एफिडेविट साथ में जो लगा है वो अपने आप को दोस्त कहती हाँ तो ठीक है, दे में गिव श्योरिटी फॉर हिम, अगर इनको बेल देते हैं। माय लॉर्ड, Appellant has filed this appeal under section so and so against judgment and conviction dated so and so. Counsel appearing for appellant submitted that appellants are convicted for short fixed term period of 4 years and fine of rupees 10,000. Full stop. It is submitted that appellants are resident of India and born in India, my lord. Born in India. Full stop. Best. However, appellants fail to produce any document to support the said claim. No evidence has been adduced by appellant before the trial court to show that they are citizens of India or they have been given citizenship of India by naturalization. Full stop. It is submitted that appellants have relatives and friends in India and they will appear before court as in when required. आप appear ही नहीं होंगे मेरे को तो लगता है। नहीं सर, रेगुलर उनके जो रिलेटिव हैं, दामाद है, वो उनसे श्योरिटी भरवाएंगे कोर्ट बिलो में। As and when required. Full stop. Appellants has a good case and looking to short-term sentence, they may be released on bail. Government advocate opposed the application for suspension of sentence and submitted that appellants are beggars and resident of Bangladesh. If they are released on bail, they may not be traceable. Full stop. Heard the counsel for the parties. Considering short-term sentence and nature of offence which is said to have been committed by the appellants, application for suspension of sentence is allowed. Appellant be released on bail on deposit of fine amount of rupees 10,000 and on furnishing surety, 2 local sureties for their appearance before this court for an amount of rupees 25,000.
सर श्योरिटी सिंगल कर दें इसमें, दो का फिर वन श्योरिटी, वन श्योरिटी वन श्योरिटी अवेलेबल में। एडमिटेड। आप लोग क्या as there are डेथ the कब है? Hello? What is the date of death and marriage? Date of marriage is 3/5/2015 Yes. and date of death is 9/9/2021. That is almost after 6 years of marriage. 6.5 years, 6.5 years, my lord. कितना टाइम हो गया आपको जेल में? My lord, I'm in jail from past. Earlier, I was in jail to 8 months, and at present, I'm in jail from 3rd of February 2024, my lord, from 9 months, man. Almost 1 years have been completed in this case. What is the basis of your conviction? My lord, they have the basis of my conviction is that I have demanded only there is an omnibus allegation regarding to demand of 5 lakh rupees. Whereas if the statement of the family members, if we see, my lord, the mother, PW2 is the mother, my lord. Yes. At para 8, my lord. मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ी हूँ। यह सही है कि मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। यह सही है कि पूनम की शादी आरोपी धनराज के साथ किस सन में हुई थी, मुझे दिनांक एवं सन याद नहीं। स्वतः कहा 3 मई को हुई थी। यह कहना गलत है कि पूनम की डिलीवरी मेरे घर पर हुई थी। स्वतः कहा कि छिंदवाड़ा अस्पताल में हुई थी। यह कहना सही है कि पूनम की जब डिलीवरी हुई थी तब आरोपी धनराज आया था। यह कहना सही है कि पूनम ने दोनों लड़कियों को जन्म दिया तो उस समय आरोपी धनराज खुश था, कोई वाद विवाद नहीं किया था। यह कहना सही है कि दोनों बच्ची आरोपी धनराज के पास रहकर आंगनवाड़ी में पढ़ाई करने जाती थी। मैं पूनम की शादी के बाद उसके घर में करीब 2-4 बार बाहर गई। यह कहना सही है कि जब मैं पूनम के घर गई तब तक मेरे सामने किसी भी आरोपी गण ने पूनम के साथ कोई वाद विवाद नहीं किया, ना ही कोई मारपीट की। यह कहना सही है कि आरोपी गण ने मुझसे भी कभी 5 लाख रुपए की मांग नहीं की। एंड व्हाट इन पैरा 12 while अटेंशन माय लॉर्ड, यह सही है कि शादी अच्छी धूमधाम से हुई थी। शादी के समय आरोपीगण द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। यह कहना सही है कि शादी के समय आरोपीगण से यह बात हुई थी कि पूनम आगे पढ़ना चाहे तो उसे आरोपीगण पढ़ाएंगे। यह कहना सही है कि शादी के बाद मेरी लड़की पूनम ने D.Ed की पढ़ाई की थी, माय लॉर्ड। एंड व्हाट आई विल ड्रॉ अटेंशन ऑफ एग्जिबिट
P21, my lord. In the year 2019, my lord, 26/12/2019, due to family discord, my lord, one complaint was registered as there was a family discord between the present appellant and the deceased. That is exhibit P21. Yes. May I read the रोज नाम से entry of it? मैं बजे सूचना पूनम भादे पति ये तो धनराज आपकी पंचायत वगैरह सब बुलाई गई है, आपको समझाइश भी दी गई है. No, there is no document pertaining to it, my lord. I'll just read it, my lord. There may not be document, but evidence तो है इस बात का. If they have to be read, my lord, then exhibit PW6 and PW7, who are the resident of that village, they have turned hostile and they have not supported the prosecution story, my lord. Even the other witnesses have clearly stated, my lord, that there was no demand of dowry. Even the father has clearly stated, my lord, that there was no allegation of the dowry in para 11, my lord. बहुत सारे allegations. Then only there are omnibus allegation, no specific allegation. What Supreme Court states, my lord, there was only a dispute, my lord. There are specific allegations. रात को गला दबाया, फिर उनकी No. तबीयत खराब हो गई, फिर दोबारा मारपीट करी, There are only पंचायत बुलाई, समझाइश दी है, सब तो है. there are only allegations, my lord. Even if I'll read the cross examinations of the family member, they have clearly stated, my lord, that at that time there was no demand of dowry and it's just in order to take revenge from me, my lord. पढ़िए मदर फादर का पढ़िए. Record is not there. Record है क्या? Office. Record is not available. Registry is directed to send the records in court on next date of hearing after 2 weeks. 46. Two-year conviction lawsuit for NDPS lawsuit. 5 gram smack has been seized from the present. पुराना रिकॉर्ड क्या है आपका? हाँ रिकॉर्ड तो नहीं है सर. कोई रिकॉर्ड नहीं. पुराना रिकॉर्ड तो इसमें नहीं है सर. चार्ज जजमेंट पे लिखा होगा ना, प्रीवियस कन्विक्शन. नहीं है सर, कहीं पे भी नहीं. लगभग 6 माह हो गए सर. Appellant has filed this appeal under section 374 Code of Criminal Procedure against judgment dated 22/11/23 by which appellant is convicted under section 821 of NDPS Act 1985 and sentenced to 2 years RI and fine of 2,000. Counsel appearing for appellant submitted that he is in jail. कब से हैं? From date of judgment, my lord. 22/11/2023 और ट्रायल लॉट से 2 माह रहा. अब तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ. आप बोल रहे हैं आपको टाइम हो गया. 6 माह लगभग सर. 22/11/2023. 22/11/23 जी. 4 महीने अभी हो गए. 2 माह ड्यूरिंग ट्रायल रहा. Counsel for appellant submitted that appellant is in jail since last 6 months. Full stop. Looking to short term of sentence, appellant be released on bail. Government advocate opposed. Full stop. No special circumstances is brought before this court like his previous conviction for rejecting his application for suspension of sentence. Application IS so and so is allowed. Sentence is suspended. Appellant be released on bail 50,000. 1 lakh और वो कर लेना. Application for condonation of delay for reason stated in application. Delay of so and so days condoned. Admitted for final hearing. Number 86. This is the first bail application under 438, my lord. में मोबाइल चोरी का एलिगेशन है, मोबाइल लूटने का. और प्रेजेंट एप्लीकेंट और कोई एक्यूज दोनों ने मिलकर मोबाइल की लूट की और जब कोई एक्यूज को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो उसके मेमोरेंडम में उसने हमारा भी नाम दिया कि हम साथ में जो एफआईआर हुई तो अननोन पर्सन निकला. और कोई एविडेंस नहीं है. 438 में आए हुए हैं. यस.
और इसमें जो कोई वो एक्यूज है नरेंद्र सौदिया, गया है वो, इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड हुए थे। आइडेंटिफिकेशन परेड में इसको सही पहचाना है और मोबाइल की रिकवरी इसके पास है। इसने ये बताया था कि मेरे साथ में जो आदमी था उसके द्वारा जो है मारपीट कर मोबाइल छीनते समय चाकू मारा, तो इसके पास से भी चाकू की भी जब्ती होने Applicant has filed first application उसमें जो 430. कोई accused महिला उसमें टोटल भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में भी आता है। It is submitted that applicant is innocent and has falsely been implicated. Government advocate opposed the application and submitted that applicant will be required for investigation of case. Full stop. Heard the counsel for the party, the offence is serious in nature. Applicant has filed application for anticipated robbery is said to have been committed by applicant. It is required for custodial investigation. Dismissed. Yes, there is not available in this case. After 1 week. $88 also case there is no. He's in jail since last 3 months, is it? No assaulted by him. वाले चौधरी हैं, इनकी 2 का विवाद है। इसको बताया कि इसकी स्कूटी में गए थे और उतर के उसमें मार दिया। कितना रिकॉर्ड्स है? इसका रिकॉर्ड नहीं है मतलब, निक्की का रिकॉर्ड है और ये निक्की के साथ में था एक्सेस में, आइडेंटिफिकेशन परेड में पहचाना। और क्या मारा है इन्होंने? चाकू से मारा, इसके द्वारा मारना नहीं, एप्लीकेंट ने मारा है, निक्की के द्वारा मारना होता है। ये साथ में था, उसके रैकी कर रहा, उसके साथ में पकड़ लिया। निक्की ने मारा है चाकू से। यस, उसकी बेल हो गई है, खड़की की हो गई। और चाकू किसने मारा है? विक्की नहीं, निक्की और विक्की ये 2 सगे भाई। विक्की जो है उसने जो इसकी रैकी करके जो है निक्की को बताया, निक्की अपने एक साथी के साथ में एक्सेस में बैठ करके आया और फिर ये निक्की के द्वारा इसको चाकू मारने बताया, तो निक्की की बेल नहीं हुई है, विक्की की हो गई है और ये इसकी लगी हुई है। Charge is filed. Applicant has filed first application 439 police station offences. It is submitted that applicant is first offender and young man aged about 24 years. Full stop. Applicant is in jail since 5/11/23. Investigation is complete and charge sheet has been filed. डेट का पर है 4 बार ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर शीट में 5 बार मेंशन कर, इसलिए हमने लिखा पिक्चर डेट जो है 4 4/12 चार्ज शीट पेश हो गई है। Government advocate opposed the application for grant of bail. It is submitted that he is said to have assaulted the victim with a knife. Applicant was doing recce for doing the incident. Heard the counsel for the parties. Applicant has not assaulted the victim. He is not main accused in the case. Investigation is complete. Charge sheet has been filed. Applicant does not have any criminal records. Considering aforesaid circumstances allowed. 50,001 surety. Second bail application, first bail लिबर्टी वायलेट। कितने रिकॉर्ड है आपके? मतलब रिकॉर्ड नहीं है इसका। यस। और इसको जो है चैन छीन के भागने के उसमें इनके खिलाफ एलिगेशन है। इसके पास से चैन की जब्ती हुई और आइडेंटिफिकेशन परेड में उसको पहचान है। कब से हैं जेल में?
25/9/2023। उसके पास से जब्ती नहीं, जब्ती इन्हीं के पास से, और इनका फोटोग्राफ जो है वो स्पष्ट दिख रही। ये सीसीटीवी फुटेज में कैच हुएंगे। यस, स्पष्ट फोटोज आए। दिखाई आपकी पहचान भी हो गई। माइलर्ड रिकवरी भी इनके पास हुई। माइलर्ड जो सीज हुआ है माइलर्ड, इसमें माइलर्ड इसमें जो सीज है माइलर्ड वो 4.42 का हुआ, जबकि माइलर्ड हमारे पास हमारा अपना जब्त कराया है पुलिस ने माइलर्ड। जो सीजर है माइलर्ड वो देख लीजिए माइलर्ड। क्या है सीजर? माइलर्ड चेन है माइलर्ड। ये तो आप एकदम मास्क करके जा रहे हैं। माइलर्ड चेन जो सीज हुई है यस, वो माइलर्ड हमने अपनी से सीज जब्त कराई माइलर्ड। ये 4.5 ग्राम की है माइलर्ड, और हमसे 4.2 ग्राम की जब्त हुई है माइलर्ड। 0.2 आपकी चेन है, आप कैसे बताएंगे? माइलर्ड जो FIR में आया है माइलर्ड 4.5 ग्राम माइलर्ड FIR में माइलर्ड, और जो हमसे सीज हुई है माइलर्ड वो 2.3 ग्राम्स की है माइलर्ड जब्ती में माइलर्ड। आपने कोई बिल वगैरह पेश किए हैं क्या कि आपकी है ये? गिरफ्तार है माइलर्ड हम। बिल तो घर ही रखे होंगे ना माइलर्ड बिल तो जेब में लेके घूमते हैं सारे बिल। माइलर्ड बिल कहाँ, गांव के लोग हैं माइलर्ड, बिल कहाँ लेते? और माइलर्ड इसमें कोई नए एक्यूज की बेल हो गई है माइलर्ड। लास्ट डेट माइलर्ड डिवाइडेड। कोई रिकॉर्ड है आपका? नो माइलर्ड। Applicant has filed first application under section 439 police station offices council appearing for applicant submitted that applicant is in jail since last more than 6 months. Investigation is complete. Charge sheet has been filed. Applicant is first offender. Government advocate opposed the application and submitted that applicant has been identified and gold chain has also been recovered from him. Evidence available against applicant is strong. Bail may be dismissed. Heard the counsel for the parties. Applicant is young boy aged about 18 years with no criminal antecedents. Investigation is complete. Charge sheet has been filed. Considering aforesaid circumstances, allowed 50,000 one surety. Also, this is the second bail application. The first application dismissed has been done with liberty, and the after 1 month, Lordship, my liberty, the co-accused is similar allegation. Mohit has been released on bail. Kindly see Lordship Annexure A3, page number 10. The offence 386. Yes. 386 सिर्फ नॉन अवेलेबल सर, बाकी 25-27 नाम सिर्फ है। और basis of that order, Lordship, as per Annexure A3, the co-accused Sunny has been released on bail by the learned trial court. Page number 10. ये लोन अमाउंट लेने गए थे? हाँ, लोन लेने। ये स्टेट लोन अमाउंट रिकॉर्ड है। दुकान के अंदर घुस करके 2 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें मोहित के पास से कट्टा जब्ती हुई है। मोहित का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अजय रिकॉर्ड का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। कितने रिकॉर्ड है मोहित के? मोहित की तो हो गई 8 है।
इसके पास से कट्टा की मोहित की बिल हो गई, हम अजय हैं। अच्छा, मोहित की हो हो चुकी गई। हाँ, अजय रेकवार का रिकॉर्ड नहीं। Applicant has filed first application, police station offences. Counsel for applicant submitted that he is in jail since 12/12/23. Main accused in the case, one Mohit, is released on bail. White order dated 29/2/24 in MCRC number 8583 of 24. Case of applicant is on parity. Heard the counsel for the parties, applicant is first offender with no criminal records. Co-accused is already on bail. And case of applicant is on parity, considering aforesaid allowed. Yes. Lordship, this is third bail application. Not last one was rejected on 19/1/24. How much is the seizure? Not, it is actually said to be 80 kilo of opium, my lord, that has been seized, my lord, in the last order, Lordship considered. Lord, actually, the Sarpanch has given a certificate that I was in the possession of the land. No, my lord, he has been examined before the court below. On the last application, my lord, his statement was not there. He has stated that, my lord, under the pressure of police, he has given not this certificate, and not that he is not aware certificate that, of not that regarding that, not land is not in my name, where the cultivation was taking place. किसने दिया? पटवारी ने? सरपंच में लॉर्ड, लास्ट टाइम लॉर्ड उसी के सर्टिफिकेट के बेसिस पे रिजेक्ट हुई थी. His statement is at page 23, Lordship, with the bail application. He has stated that, my lord, that as per the instruction of police, he has prepared it. Yes, state. And I'm in custody, my lord, for more almost 1 year. 1100 पौधे कस्टडी से 11 मिले. 1100. Lord, but none of the witness has stated that I am in the land, and land is not in my name. I am in custody from 15/3/23, Lordship. I am ready to abide every condition, Lordship. इतने सारे आपके पास आए कहाँ से? Lord, वहाँ cultivation था, but land is not mine. It is in name, my lord. I have been implicated. That Sarpanch is saying, my lord, that very clearly, my lord. ये कहना सही है कि पुलिस के डर व दबाव में आकर पुलिस के कहने पर प्रदर्शन. Applicant has filed third application. Police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that he is innocent and has falsely been implicated. Land over which ganja plants was found does not belong to him. Full stop. False certificate has been given by Sarpanch. Full stop. In these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate appearing for state opposed the prayer and submitted that offence is under special act and serious in nature. Quantity of ganja which is recovered from applicant क्या है? Commercial. पौधे. Commercial है. Commercial in quantity. कितने पौधे? 1100. These circumstances, applicant may not be released on bail. Heard the counsel for the parties. Applicant is in jail since 15 for about 1 year. Full stop. Investigation is complete and charge sheet has also been filed. Full stop. Applicant is aged about, considering the period of custody and facts of the case. Application is allowed. Repeat application is applicant with 1 lakh 1 should. Please. My lord, in this case, as per annexure 2, my lord, bail granted, my lord. And every month, my lord, appear before police station, my lord. Thereafter, applicant is a
1 वर्ष के लिए सर इस जिला बदल की कार्रवाई हो गई, इस कारण हम वहाँ हाजिर नहीं हुए। जब हमको मालूम हुआ तो 12/2 को हमने खुद सरेंडर हुए ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट किया, इसलिए सेकंड बेल एप्लीकेशन हमारा, और ओनली 2 लीटर्स 59 ए का केस है माय लॉर्ड। 49 का है, एफएसएल है, एफएसएल रिपोर्ट में हमारी 7 है अनफिट है, और हाँ वो फर्स्ट बेल में लिखा ही आपने अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। फर्स्ट रिकॉर्ड्स है, वो तो सब कंसीडर हुए फर्स्ट बेल में माय लॉर्ड। इसमें तो केवल जिला बदल की कार्रवाई थी, इसलिए हम जेल में हैं, वहाँ थाने में अपीयरेंस नहीं दे पाए थे। वाइफ प्रेग्नेंट है सर, अपनी डॉक्यूमेंट लगा नेक्स्ट थ्री, और खुद हम जेएमएफसी के यहाँ सरेंडर हुए हैं माय लॉर्ड। ये 12/2/24 को माय लॉर्ड, जब आपको पता चला तो फाइनली से एनेक्जर टू प्रेग्नेंट के कागज माय लॉर्ड, पेज 10 से। ये आपकी जो बेल लगी है वो तो 49 ए में लगी है एक्साइज एक्ट में माय लॉर्ड। आपका जो वायलेशन है उसके लिए कहाँ है? वेयर इज ऑर्डर, इम्प्यून ऑर्डर? माय लॉर्ड A1 पेज 5, पेज 5। You did not appeared in court. नहीं, और फिर वो हमने 12/2/24 को ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर जेएमएफसी। और ये Applicant has filed second application under section 439(2). Counsel for applicant submitted that he could not comply with conditions of bail order as an order for externment was passed against him. Due to said order, he could not appear as directed. Full stop. It is submitted that considering facts of the case, applicant be released on bail. Government advocate opposed. Heard the counsel for the parties. Considering the fact that heard the counsel for the parties, applicant is sent to jail due to his non-appearance before court. आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया है? ऑर्डर फाइल किया, एक्सटर्नमेंट ऑर्डर? ऑर्डर ये है सर, फाइल तो नहीं किया, ऑर्डर नहीं फाइल किया। ये 7/2/22 का ऑर्डर है। An externment order is passed against applicant on 7/2/22. Due to said reason, he could not comply with the directions given in bail. Considering aforesaid circumstance, application is allowed. कब तक का एक्सटर्नमेंट है? मान लो तो हो गया, खत्म हो गया। हाँ, इसलिए तो हम कोर्ट में प्रेजेंट हुए और फिर हमने ऑब्जेक्शन फाइल होना है। ऑब्जेक्शन 4 weeks टाइम रिकॉर्ड कर लें सर। इसमें 20 ईयर का कन्वेक्शन रिकॉर्ड पे है, सॉरी लाइफ कन्वेक्शन है सर। ये टैक्स जाएगा सर। Present appeal is being barred by 10 days to its filing, my lord. इसमें भी ऑब्जेक्शन फाइल होना है। application for condonation of delay is allowed. Delay is condoned. Registry is directed to call for the record. State government is granted. Record is already there, my lord. And conduct this case with the criminal appeal number 1179/2024. कार्ड देना। Government advocate is granted 4 weeks time to file objection. Is this matter along with CRA number 1179 along with so and so after 4 weeks? 1179 1179/24। ये लगा तो है साथ में, पहले ही लगा हुआ है। After 4 weeks. My lord, in meantime, in respect of the IA number, file an application for reduce the fine amount, my lord.
आने दीजिए, देखेंगे अभी जवाब They may be verify the fact, my lord. जवाब आने दीजिए। Yes. Number 95. Oblige. This criminal appeal is filed active by the 19/1/2021. 1 year's imprisonment is granted, my lord. So he is already suspended till Application is allowed. ऊपर लिख देना sentence is suspended by the trial court based on bail. my lord, record be called. Court called, admitted. Court नहीं है, record called at list for admission after 4 weeks along with record. My lord, short sentence, SHRI for 3 years, my lord, Yeah. NDPS. Allowed. Right. Just a minute. Records 10 kg 100 ग्राम गांजा था, 32 पेड़। admitted for hearing. 97. Your Lordship, I am praying for 2 weeks time, Lordship. As prayed at June. ऑब्जेक्शन भी इसमें Government advocate pays for time to file objection. After 4 weeks, we commencing. कुछ तो कॉल करेंगे। Number 54. Lordship, by way of this revision, the petitioner is challenges the impugn order, Lordship, by which this impugn order has been filed as an annexure A4, sir. Why it is listed on maintainability? Maintainability, when Lordship, the Honorable Supreme Court has held that, Lordship, in one case, the revision petition is maintainable. Against what? This is against? Against the order dated learned ASJ, annexure A4, sir, page number 67, in which, Lordship, the condition had been imposed as 2,74,87,87,260 has to be deposited within a period of 60 days. Who is appearing for other side? Other side, Lordship's notice has not been issued, and Notice to respondents. Payment of PF 7 days. Lordship, 22 तारीख last date है sir, थोड़ा What? 20. For what? Have to be deposited, otherwise our bail be cancelled. That order is under challenge. Bail भी दे देंगे आपको, उसमें क्या है? So sir, order has been challenged. तब तक interim protection में kindly given because the parties, Lordship. So what interim protection you want? Because in 60 days, Lordship, Stay over order. I have to. No court से step कर दें sir, और कभी भी रखवा दें notice के बाद. आप अभी जेल में हैं? नहीं सर, हम बेल पे हैं, पर हमको 272 जमा करना है सर 22 तारीख के पहले. एमपी ऑर्डर नहीं है सर. To respondents, no coercive action of arrest be taken against applicant if he does not deposit the amount as directed. Oh, obliged. 4 weeks we commence. 4 weeks. Okay. None appears at June. अलर्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे 58 में सर, हमारा WPS है आपने रिक्वेस्ट नहीं किया है क्या? सर. अभी आया था तो बाबू साहब ने लिखा कर दीजिएगा, ये लिस्ट खत्म हो जाए फिर देख. सर. 58 में बीएड का है सर, उसमें इंक्रीमेंट का सर ऑर्डर लगा हुआ ऑलरेडी पहले. कवर्ड मैटर है जी. देखते हैं, खत्म होने दीजिए. जी. Yes. So by the impugned order, the respondents are directed for recovery of a sum of rupees 2,81,517 from the salary of the petitioner. Yes. Now the case is like this, my lord, that the government issued a police order, my lord, which provides for grant of extra allowance to persons deployed in connection with anti-terrorist duty. Yes. That is those who are posted in anti-terrorist squad.
Now the petitioner was posted in that spot, he is still posted. She is still posted, and therefore she was paid this amount. Now by the impugn order, the respondent said that she is not entitled for payment of this amount, and directly recovery has been ordered. Now no show cause notice, no opportunity of hearing was afforded to me. Where is order? That is annexure P4, P7 at page 40. P7? P7, page 40. It's called Jokhim Bhatta. भुगतान होना पाएगा जी. Yes, state any notice? reply. A notice to respondent of PF 7 days. Counsel for petitioner submitted that order of recovery has been passed against petitioner without giving any opportunity of hearing. Order dated 13/10/23 shall remain next date of hearing. This matter after service of notices respondents. रिक्वेस्ट आइटम नंबर 32 माय लॉर्ड, कॉस्ट लगाई है माय लॉर्ड, Yes, फाइल I'll consider. उसको माफ कर दिया जाए माय लॉर्ड, निवेदन है, रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड। ये देख लेना।
2014 को भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई थी क्या? संभवतः सर थाने पे काटी गई होगी सर, मैं मुझे स्पष्ट संभवतः थाने पे काट दी गई, वो डायरी देखो ना, होगा ना आपके पास। It is submitted that in the Jarayam register it is mentioned that one closure report was filed on 1/11/2014 containing MJCR number 1013718/2014. Accordingly, it is submitted that earlier he had made he submitted that by mistake earlier he had made an incorrect statement that the second closure report was filed on 1/11/2017. However, CSP Balaghat was not in a position to explain as to whether any closure report was also filed on 1/11/2014, and if so, what orders were passed by the magistrate. Since the endorsement, which is in red color, also contains the case number as MJCR/013718/2014, therefore, it appears that that first closure report was filed sometime in the year 2014, which was not accepted by the magistrate, be that whatever it may be. One thing is clear, that after the closure report dated 29/9/2017 was rejected with a clear direction to conduct a further investigation, nothing was done by the investigating officer. Furthermore, there is nothing in it was also not mentioned in the Jarayam register that the investigation is closed. Accordingly, it is clear that even according to the records of the police department, the investigation was pending. But still, the officers inspecting the police station conveniently ignored the said aspect. Police system. It is not out of place to mention here that in the Jarayam register, after the entry dated 29/9/2017 has been made, another entry has been made to the which reads as under. खारजी पेश दिनांक 15/3/24 न्यायालय माननीय CGM महोदय केस नंबर MJCR/33/24/15/3/2024. It is submitted by CSP Balaghat that after conducting the further investigation, now the closure report has been filed, which is still pending consideration before the court of CGM Balaghat. Since the closure report is pending consideration, therefore this court would not like to make any comment on the merits of the case, but would certainly like to consider whether the officers were discharged, whether the negligence on the part of the investigating officer as well as the supervising officers is amounts to negligence, or they were out and out to act in a particular manner with an intention to give undue advantage to any other person. Accordingly, Shri so-and-so CSP Balaghat was directed to explain as to what steps were taken by him to look into the matter. It was submitted by Shri so-and-so that he has recently joined. Accordingly, he was directed to disclose the date of joining. Then he submitted that he had joined on 22/4/2022. It is really surprising that even after spending 1 year and
11 months, the CSP Balaghat is of the view that he has recently joined. Be that whatever it may be, it is for the DGP as well as for the state government to look into the conduct of their officers. Accordingly, CSP Balaghat was directed to point out from the Jarayam register or from the police case diary as to whether there is any entry with regard to holding of any further investigation or not. After going through the police case diary, it was submitted by Shri So-and-so CSP Balaghat that as per the statements which are the part of the police case diary, the statement of Shrimati Jyoti, one of the accused, was recorded on 25/1/2021. Statement of one Shekhar was recorded on 15/2/2021. Statement of one Shrimati Smriti Nagpure was recorded on 21/7/2021. And the statement of Shri Devendra was recorded on 22/7/2021. Accordingly, Shri So-and-so CSP Balaghat was directed to point out from the case diary as to whether any case diary proceedings were written on 25/1/2021, 15/2/2021, and 21/7/2021, pointing out that the statements of Shrimati Jyoti, Shekhar, and Smriti Nagpure were recorded on the said dates. It is fairly considered by Shri So-and-so CSP Balaghat that the police case diary does not contain the case diary proceedings of the said date. It was further submitted by Shri So-and-so that ideally को थोड़ा सा bold और underline कर दीजिएगा. The investigating officer must record the proceedings in the case diary on the date when the investigation was done, but in the present case, it has not been done. Accordingly, Shri So-and-so was directed to explain the meaning of word ideally and was directed to point out from the police regulations as to whether the investigating officer is required to record the daily proceedings, or he can write as per on any subsequent date as per his convenience. By referring to paragraph 642 of police regulations, it was fairly considered by Shri So-and-so CSP Balaghat that daily action taken by the investigating officer has to be recorded in the case diary. Para 640 police system. However, it is fairly considered that the investigating officer did not record the police case diary proceedings on 25/1/21, 15/2/21, and 21/7/2021. The daily case diary proceedings are generally recorded to cross-check the action taken by the investigating officer. Once there is no document to cross-check as to whether the investigating officer had really recorded the statements of Shrimati Jyoti on 25/1/21, Shekhar on 15/2/2021, and Smriti Nagpure on 21/7/2021, then there is every possibility that the investigating officer must have concocted and created the false statements of the aforementioned witnesses as well as accused, be that whatever it may be. The police case diary contains the case diary proceedings dated 22/7/2021, which reads as under. वो भी ले लीजिए पूरा. In this case diary proceedings, there is no mention that the statements of case diary रोज नाम चाहिए मेरे को. That the statements of Shrimati Jyoti, Shri Shekhar, Shrimati Smriti Nagpure were recorded on 25/1/21, 15/2/21, and 21/7/2021. But it is clear from the case diary proceedings dated. It appears from the case diary proceedings dated 22/7/2021, the statements of the witnesses were recorded on the said date.
That is 22/7/21. Thus, it is clear that the investigating officer was manipulating the records, and it was not noticed by the by the officers having supervisory power. Furthermore, ये अपना 25/1/15/2 और 21/7 इसका कोई रोजनामचा भी नहीं है, ये है. Furthermore, it is fairly considered by Shri so-and-so CSP Balaghat that no Rojnamcha Sana of 25/1/2021, 15/2/2021, and 21/7/2021 are in existence to justify the recording or to corroborate the recording of statements of Shrimati Jyoti, Shri Shekhar, and Shrimati Nagpure, Smriti Nagpure on the aforesaid dates. Thus, in all probabilities, the investigating officer has created and concocted the statements by projecting them to be the statements of the witnesses and the accused. It is also not known as to whether the investigating officer had visited their houses or the witnesses and as well as the accused was summoned in the police station. Even from the case diary proceedings dated 22/7/2021, it is not clear that the investigating officer had ever visited the house of Devendra or Devendra was called in the police station. The police case diary also does not contain any notice issued to any of the witness to indicate that they were ever called by the investigating officer in the police station. Thus, even the police case diary proceedings dated 22/7/2021 is under the cloud of suspicion, and it appears that nothing was done except creating the false documents. And that is why all these proceedings do not find place in the Jarayam register. Thereafter, the misdeeds of the investigating officer did not come to an end. And then he again conveniently sat on the further investigation, sat on the matter. The Superintendent of Police Balaghat in his affidavit has stated that during the monthly crime control meeting, this case was not shown pending, and therefore it was not within his knowledge that this investigation is pending. It is really surprising that in the Jarayam register, it has not been disclosed that this investigation is over. Still, it was being projected by the investigating officer as well as the concerning SHO police station, Balaghat, Kotwali hai ki Balaghat hai? Kotwali Balaghat, as the closed investigation. Why the SHO police station Kotwali Balaghat was showing such keen interest by showing this investigation as closed is also a matter of investigation. Police story. However, the darker side of the picture is yet to come. This court, by order dated 12/3/2024, had directed the Superintendent of Police to file his affidavit. But instead of taking up the matter in his own hand and looking at the documents and making an attempt to file a proper affidavit, it appears that he also dealt with the case in the most casual manner. It is submitted by Shri Swapnil Ganguly that on 16th of March 2024, the matter was handed over to the Additional Superintendent of Police to conduct an inquiry. It is really shocking that the Superintendent of Police Balaghat, instead of conducting an inquiry on his own, delegated the matter to Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police Balaghat,
who also sat conveniently, knowing fully well that the case was listed for 19th of March 2024 for consideration of affidavit of Superintendent of Police Balaghat. It is submitted by Shri Swapnil Ganguly that some reasonable time is required for the additional Superintendent of Police Balaghat to look into the affairs. It is really surprising that the entire controversy revolves within three documents. Jarayam Register, Rojnam Chasana, and case diary, police case diary. Still, the additional Superintendent of Police Balaghat was not in a position to conclude the inquiry within a period of 4 days, whereas the entire illegalities were detected by this court within 2 minutes after looking at all the three documents. Thus, it appears that the entire effort of the Superintendent of Police Balaghat as well as the additional SP Balaghat is to protect the officers, police officers who were malafidely acting in the present case. Police system. Accordingly, the Director General of Police Balaghat, State of Madhya Pradesh, is directed to conduct an inquiry into the matter and fix the responsibility of Superintendent of Police Balaghat, Additional Superintendent of Police Balaghat, Shri So-and-so CSP Balaghat, present SHO Police Station Kotwali Balaghat, the then SHO Police Station Kotwali Balaghat, as well as the investigating officer. This court has already come to a conclusion that the investigating officer as well as the then SHO Police Station Kotwali District Balaghat were out and out to give undue advantage to the accused persons, because in spite of the direction because first of all, they took 4 years to file the closure report. Bracket mein likhega, this finding is not final because the Jarayam register also contains a date that on 1/11/2014, one more closure report was filed. And the outcome of this said closure report is not known. Bracket close. Thereafter, without making any corresponding entry as required under the different provisions of police regulations, the documents were created by falsely showing that the investigation has been done. And again, the matter went in hibernation, and the investigating officer was all the time sleeping over the matter. And neither the then SHO Police Station Kotwali District Balaghat took any pains to verify about the status of the pending investigation. And even the CSP Balaghat also did not take any pains. Full stop. Accordingly, this court is of the considered opinion that the investigating officer and the then SHO Police Station Kotwali Balaghat have prima facie committed an offense under Section 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act, bracket mein likhiyega, since all these things happened prior to the amendment in the Prevention of Corruption Act in the year 2018. Therefore, this court has referred to the pre-amended section of Prevention of Corruption Act, bracket close. Accordingly, the Director General of Police, State of Madhya Pradesh, is directed to register an offense punishable under Section 13(1)(d) of PC Act against the then investigating officer and the then SHO Police Station Kotwali District Balaghat. Thus, the Director General of Police is also directed to verify as to whether
any other person has any role to give undue advantage or not. If it is found that some more persons had given undue advantage and have committed the offense punishable under the provision of Corruption Act, then they can also be implicated in the said offense. Let the report be submitted within a period of 1 month from today. List this case on. Today is 20th, sir. 22nd of April 2024. The report shall be submitted. It is made clear that the investigation/inquiry shall be conducted by the Director General of Police, State of Madhya Pradesh only, and he would not delegate or assign this duty to any officer. Full stop. The report must be filed with the affidavit of Director General of Police, State of Madhya Pradesh. Sure. The police case diary as well as the Jaraim register are returned back. Can I make? डायरी को अभी आप रख लीजिएगा, उस पर लिखना है, आप ले लीजिएगा. Sir, order is dictated. Can I make? There can't be any amendment. Yes, I can add something to add to that also. Just one consideration. हाँ जी. One. हाँ बताएं ना बताएं. Since the instead of DGP, may kindly. Sir ji. IG or any other. Yes. Or other. Yes. और बेइज्जती कराऊं मैं हाई कोर्ट की. नहीं. Mr. Swapnil Ganguly, what is your explanation when your SP was directed to file his affidavit? Why he handed over the matter to additional SP? What is your explanation? Why you are saying that I should give it to some subordinate officer? I didn't ask the DGP right from day one. Initially, I directed the SP, who is the captain of the district, to submit his affidavit. What he did? Handed it over to the additional SP. The additional SP in his turn voluntarily sent this person to the court. जाओ देख क्या बताना क्या हुआ. सर वो डायरी वगैरह. Whatever it may be, sir. I am least concerned. I am least concerned. Please explain why your SP did not conduct the inquiry on his own. Specifically when he was required to file his affidavit. No, sir, sorry. No, sir, sorry. A big sorry, because I have seen the conduct of your SP and I don't want the repetition of that aspect in this court. At this stage, it is submitted by Shri Swapnil Ganguly that instead of directing the Director General of Police, State of Madhya Pradesh, to conduct an inquiry, some another officer like IG may be directed to do the needful. Consider the submissions made by Counsel for the state. This court, by order dated 12/3/2024, had directed the Superintendent of Police Balaghat to submit his affidavit explaining the issues mentioned in the said order. Shockingly, the Superintendent of Police Balaghat did not take the order with seriousness and in his turn handed over the inquiry to the Additional Superintendent of Police Balaghat. If the police officers are not ready to take the orders of the court with seriousness, and if they are not ready to realize the mistakes which are being committed by their own department, then this court is left with no other option but to direct the Director General of Police to conduct the inquiry by himself, so that he can realize the malafide actions which are being done by his subordinate police officers, thereby jeoparding the rights of the citizens of the country. Accordingly, the prayer for assigning the inquiry to some other officer except the Director General of Police, State of Madhya Pradesh is hereby rejected. डायरी आज ले लीजिएगा क्योंकि वो रिप्रोड्यूस होना है, उसको आज ही वापस कीजिएगा, उसको रिप्रोड्यूस करा के उसको वापस करवा. Can this be taken by us or? Pardon, sir? Can it be deposited or it can be? नहीं, आप वापस ले जाइए, उसका हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हमने देख लिया है. अब आप जब मैनिपुलेशन करोगे तो मरोगे. Item number 102. The Pankaj Dubey. The record is there. Again? Yes.
It is seal cover record, my lord. खोलो तो ऐसा कौन सा वो confidential document है that you cannot open the file? They brought this. I don't think the security of the country is involved in this lie envelope, sir. My lord, so far your lordship the possession. And the only question is where is the possession Panchanama? But that is all. My lord, with all respect, my हाँ lord. तो respect मत करिए सर, आप तो बस कागज देख के बताइए कौन सा है. Proceeding under section. अरे सर आप कागज तो देखा नहीं, जबरदस्ती बहस कर रहे हो. Just point out the Sir, page number, kindly have a look for a moment, page number 8, my lord. Page number 8 of the reply, my lord, there is a warrant, your lordship, of the possession. Page number 8 of your reply. Yes, my lord. अच्छी बात है सर, कोई डॉक्यूमेंट है, annexure है कि ये annexure है, my lord. Page number 8, R3. R3. ये क्या है सर? This is the your lordship. भाई साहब ये मैं पढ़ चुका हूँ. ये मैं पढ़ चुका हूँ. अब आप हिंदी में बता दीजिए शुद्ध तरीके से, इसको आप पोजेशन पंचनामा बोलते हैं क्या? सर इसको नहीं कहते हैं. नहीं कहते तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? My submission is that your lordship, the proceeding your lordship under section 10(3) has been. भाई साहब. My lord, the possession warrant is also on record, your lordship. We have taken the possession. एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ बता दीजिए. देख लिया ना अभी भी आपके टोन वही चल रही है. पेज नंबर 9. अभी भी आप लोग की टोन वही चल रही है, एजी ऑफिस की भी. अभी एक मिनट पहले देख लिया कि कागज रखे हुए हैं, कह रहा कि हमने सब कर लिया. Sir, with all respect, don't give respect. We want an answer on merits. That is all. Factually answer दीजिए. Factually answer is that. हाँ तो आप बताइए, सीधा बताइए कि possession. Page number 9 of. Page number 9. So this page number 8. This is the possession letter, my lord. This is a letter directing the Tehsildar to take possession. Page number 9, my lord. 9. नहीं, number 8 जो है, this is a letter directing the Tehsildar to take possession, right? Ahead under the provision of section 10(5). आधिपत्य पत्र, ये क्या है सर? Yes. एक पक्षी तो सीधा बोलो ना, सीधे यहाँ पे. वही मैं आना चाह रहा था. सर ये इन्होंने पोजेशन लिया है किस जमीन का? सर ये तारीख इसमें एक पक्ष तारीख नहीं दिख रही, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ. बताइए सर. (4392). That's what the claim is. सर 12/9. And जी सर तारीख बता. तारीख नहीं है. The judgment. And R5 is also on record, your lordship, the proceeding which is being conducted by the your lordship, the concerning authority, and kindly turn to page number, my lord, 11, your lordship. तहसीलदार जबलपुर द्वारा की गई जांच और प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रकरण की वादग्रस्त भूमि नगर भूमि सीलिंग अधिनियम 1970 के अंतर्गत एक पक्षी कार्रवाई तत्कालीन तहसीलदार नजू द्वारा प्राप्त कर लिया गया है. तारीख बता दो सर. इसमें ऑल रिस्पेक्ट माय लॉर्ड, तारीख तो नहीं है, बट इसमें लिखा नहीं है तारीख, बट आज दिनांक को डैश को भूमि को अधिपस हो जाएगा. चलो. बट देयर इज माय लॉर्ड एक पक्षी ले लिया गया. दैट इज आवर सबमिशन. सर जी ब्रांड साहब. My lord. सर बताएं. My lord, can I take, my lord, there's an earlier round of litigation, my lord. And that is annexure P6, my lord, is the
order passed by this honorable court. Mm-hmm. If I can take, my lord, directly to page 91. Right, sir. My lord, if I may read a second paragraph, my lord. Having heard Mr. Jain. Having heard Mr. Jain, the learned counsel for the petitioner and Shri Harish Agnihotri, the learned government advocate on a perusal of the order dated 22/6/2001, it is crystal clear that the competent authority was directed to find out whether the possession has been taken over as provided under Section 10 of the Urban Land Sealing and Regulation Act, and if the same is not taken over as stipulated aforesaid, Section 4 of the Urban Land Sealing and Regulation Repeal Act 1999 would come into play and the whole thing would abate. Mm. Well, accordingly, the order that was impugned, the order of 2005, that order was quashed by this honorable court, my lord. And there was an earlier proceeding. And the matter was remitted back, sir. Yes, my lord. And there was an earlier proceeding on which he relied upon, my lord, where a categorical finding of the competent authority is, this is at page 83, my lord, annexure P4. Yes, My lord, this authority very categorically says that no notice was ever issued to the landlords before alleged possession was taken. There's a typed copy also, my lord, just after this, in paragraph 3 of his order, my lord. अर्थात कब्जा लेने के पूर्व भूमि स्वामी को मौके पर उपस्थित रहकर कब्जा देने के लिए कोई नोट जारी नहीं किया गया है. Right, sir. So, my lord, the Urban Land Sealing Act. Now, my lord, if we come to the notice on which they rely. Sir, let us come. Sorry, my lord. Section 10, sir. That section 10(5) comes into play, my lord, when there is no resistance. And 10(6) when there is resistance. But in both sections both provisions require a notice, prior notice, my lord. If I may read section 10(5), my lord. Where any vacant land is vested in the state government under subsection 3, the competent authority may by notice in writing order any person who may be in possession of it to surrender or deliver possession thereof to the state government or to any person duly authorized by the state government in this behalf within 30 days. So this would be a peaceful possession. If any person refuses or fails to comply with an order made under subsection 5, the competent authority may take possession of the vacant land or cause it to be given to the concerned state government or to any person duly authorized by such state government in this behalf and may for that purpose use such force as may be necessary. Yes, sir. So, my lord, now here what we have a situation, my lord, where section 10(5) has not been acted upon, 10(6) also is not acted upon. No, and the record, my lord, admittedly shows that there was no notice was given either under 10(5) or under 10(6). So, suppose the question is that if the possession is taken without issuing notice under 10(5), whether it can be said to be a valid possession or not? Yes, my lord. It No, cannot. So now what they say, my case is this, not that I am being treated as a trespasser. If my lord may see the opening sentence That's of. fine, sir. पहले हमको तो इसको तो पहले आंसर करना पड़ेगा ना, sir. What, my lord? That taking of possession without issuing notice under section 10(5), whether that proceeding would be legal, will be legal or not. That was, yes, my lord, in 2013 judgment. That was interpreted, my lord. Considered and answered that notice is mandatory, my lord. The word may has to be read as shall. My lord, can I refer to paragraph 37, my lord, of this judgment? Paragraph 37, my lord. 37. May I read, my lord? Yes.
The requirement of giving notice under subsections 5 and 6 of section 10 is mandatory. Though the word may has been used therein, the word may in both the subsections has to be understood as shall, because a court charged with the task of enforcing the statute needs to decide the consequences that the legislature intended to follow from failure to implement the requirement. Effect on non-issue of notice under subsection 5 or subsection 6 of section 11 is that it might result in the landholder being dispossessed without notice. Therefore, the word may has to be read as shall. Sir. Sir, but possession is taken, before the possession is taken, the land had already vested in the state government. Well, the vesting also, this is a de facto vesting. Naturally, it has already vested. De jure, sorry. That would be naturally, sir. Huh? So, in the case No, of... but what is the difference between de jure and de facto? De jure is wider than de facto. De jure is, my lord, on paper it has been taken. Once the land had already vested in the state government by force of law, can you say that you will still continue to be Yes, the owner? my lord. That is how the act, this provision has been interpreted. The word possession has been interpreted by the Honorable Supreme Court, and it has been consistently followed thereafter, and by this Honorable Court also. Now, what has to be there is not a de jure possession, it has to be a de facto possession. This is what 2013 judgment says, and is consistently, as I said, followed till recent. J. If I may read that, my lord? Yeah, please, from the judgment. Please, sir. Not this one. Sir, please. Paragraph 34, 35, my lord. Of this same judgment? Same judgment, my lord. This has dealt with the entire issue, my lord, at length. If de facto possession has already passed on to the state government by the two deeming provisions under section 3 of section 10, there is no necessity of using the expression where any land is vested under subsection 5 of section 10. Surrendering or transfer of possession under subsection 3 of section 10 can be voluntary, so that person may get the compensation as provided under section 11 of the Act early. Once there is no voluntary surrender or delivery of possession, necessarily the state government has to issue notice in writing under subsection 5 of section 10 to surrender or deliver possession. Subsection 5 of section 10 visualizes a situation of surrendering and delivering possession peacefully, while subsection 6 of section 10 contemplates a situation of forceful dispossession. The Act provides... Actually, Abhi, why I put that question to you, because recently in that Indore Corporation's case, my lord, Land Acquisition Act. There was a distinguishing feature, my lord. I saw that. Right. Once the land has already vested in the state government, whether the state government can be divested of its right merely because a paper notice, which otherwise was not required to decide any controversy, a particular piece of land was already declared as surplus, and further inquiry was not required under section 10(5). Whether a land which had already vested in the state government can be and whether the state government can be divested of the said land merely because a paper formality requiring no further investigation or inquiry was not done. Well, there was it amounts to divesting of the state government from the land which had already de jure vested in it. Well, there was the object of the two acts are entirely different, my lord. Urban Land Sealing Act and the reason for its repeal. Then that is the Land Acquisition Act, which was in. मेरा क्वेश्चन वो नहीं था. You may be right. थोड़ा सा मुझे मेरा जो था मैं थोड़ा सा उसको narrow down कर देता हूँ so that you may be able to realize कि मैं क्या चाह रहा था. Once the land has already vested in the state government, whether the state government can be divested or can be deprived of that land. If I may just interrupt here, my lord. If, my lord, the query at this point, the answer would be in 34. Sir, वो larger bench है. No, my lord, that's also two judgment, 23 judgment. Sir, once there are conflicting judgments or multiple judgments, then we have to consider the strength of the bench.
Yes, my lord. Right. I don't know whether it's the same judgment if my lord was to. नहीं, वो तो 2020 का है सर, इंदौर वाला तो 2020 का है. No, my lord, the one of 2023, my lord, last date, my lord had mentioned the judgment. Not that, sure. One was mentioned. It's of 2023. नहीं, strength of the bench. Two judges. और वो तो larger bench है सर, 5 judges होना चाहिए मेरे ख्याल से इंदौर वाला. No, Indore one is of, my lord, that was headed by Honorable Justice Arun Mishra. Yeah, That one. yes, That was on a different point. That was on a different Trespass, point. मेरा question ये था कि once a 5 judges bench has held that once the land has vested in the state government and it cannot be divested, तो यहाँ पर भी de jure vesting है और यहाँ may word है. Yes, Supreme Court has held that it has to be read as shall, no difficulty. But once the land has already vested, free from all encumbrances in the state government, with no further inquiry to be conducted, so then what will be the effect of that discussion in that 5 judges My bench? lord, that vesting has taken place under the different statute, my lord. Sir, once the formalities as provided under the said statutes are over, so we are not concerning about the formalities which are required to be performed in that act. Once those formalities are over and the land stands vested in the state government, and once the formality in this proceedings are over and the land has vested in the state government, I am only on the question whether after the vesting of the land in the state government, whether it can be taken back. My lord, yes, my lord, under this statute, Because of repeal act, it can be taken back. Yes. Because of the everything revolves around the possession. possession. अब सवाल इस बात का है सर, मेरे को वही मैं समझना चाह रहा था कि यहाँ पे ठीक है shall word है, when nothing is required to be pleaded by the owner, nothing is required to be proved by the owner, the land has already been declared as surplus. Suppose अगर 10-5 का notice भी आता, तो what reply the owner could have filed? But that is, my lord, hypothetical now. It is hypothetical. That's what I'm saying. So I'm putting a hypothetical question. Now, we don't know what the owner would have answered, because here the owner says that my land is agricultural land. It doesn't fall within the act, sealing act. That was So his far as the sealing part is concerned, under 10(5) he cannot challenge the findings. My lord, he has a right to appeal to right up to that. Filing of an appeal is different aspect, sir. We are confining ourselves to 10(5). Now, why I say, my lord, I was mentioning appeal, because if my appeal was also pending, then the repeal act would come into my play. And No, my but favor. that is not the case. But here, what has happened here, possession has not been taken. Possession has been taken, but without notice under section 10(5). This is the finding by the Tehsildar. We will look into that, sir, to what extent the findings Well, are let us correct. see, my lord, let us see their reply, my lord. The finding of the Tehsildar also and their reply also. Sir, First sentence of the मुझे record दीजिएगा. first sentence of the reply, my lord. My lord, can I draw my lord's attention? Yes, sir, Paragraph please, sir. one? Please, sir. Yes, my lord. In reply to para 1, it is submitted that the land in question is in possession of the petitioner number 1 Sir, as trespasser. Sir, so far as that aspect is concerned, the question whether it is in your possession as trespasser That was or the only not, issue left, my lord, because as per my lord's That- order, earlier order, it was what had to be decided was the possession is with whom? So that is immaterial according to me. My lord, According my lord's to order me. it was my lord's order, my lord, it cannot be. Yes, no worry. My lord. Don't worry, sir. वो My तो- lord, in the point, if one is them, it's an admitted fact that it's in my possession and I'm being treated as a trespasser. Right, sir. This was the order that was passed in 2005 and which was quashed by my lord. That was quashed. Now, my lord, same issue has came up before the Indore bench of this honorable court, my lord. Sir. Where a stand was taken, my lord, that the landowner was a trespasser, an encroacher. Same, this thing that
Instead of the in word trespasser, the word descriptive word was encroacher. Mm-hmm. My lord held that the encroacher itself, the fact that I was an encroacher showed that the possession was with me, and therefore हेमंत को बुलाना जी सर the petitioners have been found in possession, but they were treated as encroachers. The petitioners were the original owners of the land before the proceeding initiated under the ULC Act of 1976, but ex parte possession was obtained on paper. They were not physically dispossessed or handed over the possession to the competent authority of respondents. This court has already held that if they are in possession, then entire proceedings shall be treated as abated. The commissioner has found them in possession. Therefore, the order passed by the commissioner dated 23/10/2020 is set aside. The proceedings initiated under the provisions of the ULC Act of 1976 are also set aside. So the facts are almost identical, my lord. Difference is only this: I'm being treated as a trespasser and they encroacher. Yes, the same. Technically, it's the same thing. Yeah, the descriptive term is this. Soul and spirit is the same. Yes. So my point, my case is this, my lord. Sir. I was before my lords earlier. I was being treated as a trespasser. If I may just confirm that, point that out, my lord, that order that was impugned in the earlier round of litigation. जी और आपका क्या कहना है सर कि आपने कब्जा लिया? Yes, sir. No, my lord. Sorry. Sir. My lord, page number 87. Sir. In this order also, it has been mentioned that possession has been taken and I am a trespasser. My lord had quashed this order and only directed the authority to find out who is in possession of the land. The object of that order was, my lord, that to see that if the possession is with the state government, then its physical possession is with the state government, then I'm out of the picture. If it is with me, then the Repeal Act comes into play. That's what my lord order specifically says, that section 4 will apply. Sir. So now here, my lord, it's an admitted fact in the pleadings as well as in all the orders that I'm a trespasser and therefore the possession is with me. Sir. Now, relying upon the judgments from 2013 onwards, my lord, where the judgment says that there has to be a de facto possession. Sir. Together with the last judgment, my lord, that is the judgment of the Indore bench of this honorable court, which says that an encroacher is an actual possession and therefore the repealing act comes into play, my lord. Yes. Lord, kindly have a look for a moment, Your Lordship. The order which is been impugned before this honorable courts, which starts from page number, my lord, 93. The relevant paragraph is at page number 97, my lord. Shall I read, my lord? Page number 97, my lord. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की याचिका क्रमांक 1600 आदि दिनांक 1600 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार नजूर को कब्जा की वास्तविक स्थिति की जांच व प्रतिवेदन हेतु प्रकरण तहसीलदार नजूर को भेजा गया। तहसीलदार नजूर की जांच प्रतिवेदन 20/6/2007 को आदेश पत्रिका में ही दिया जाएगा। प्रकरण में संग्रहण है। तहसीलदार नजूर के प्रतिवेदन दिनांक 20/6/2007 के अनुसार प्रकरण में श्रीमती सोएंसो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की याचिका क्रम 7715/2005 में पारित आदेश दिनांक 16/8/2005 के अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर जांच प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार जबलपुर द्वारा की गई जांच और प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रकरण में वादग्रस्त भूमि नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत अतिशय घोषित की गई, जिसका कब्जा तत्कालीन तहसीलदार नजूल द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि नगरीय अतिशय भूमि
घोषित मतपत्र शासन नजूल दर्ज की गई। प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता सोएंसो की लिखित तर्क कंडिका सोएंसो मेरे दौरान न्यायालय का राजस्व क्रमांक सोएंसो तहसील नजल के कब्जा क्रमांक सोएंसो तहसील नजूल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन 20/6/2007 और अधिवक्ता के सोएंसो लिखित तर्क में दिनांक 4/5/2009 के सूक्ष्म परीक्षण व अध्ययन किया गया। तहसीलदार नजूल के प्रतिवेदन एवं तहसीलदार तत्कालीन नजूल के कब्जा क्रमांक 16 अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमित अधिनियम 1976 के प्रावधान के तहत अधिकृत अधिकारी तत्कालीन तहसीलदार नजूल द्वारा विविध दिनांक 4/3/1990 को कब्जा लेकर भूमि पर अधिग्रहण के स्थान पर राजस्व अभिलेखों के शासन का नाम दर्ज कर दिया गया। अतः भूमि न लेने का प्रश्न ही नहीं है। जहां तक वादग्रस्त भूमि पर आवेदकों और धारकों द्वारा कब्जा करने का प्रश्न है, यह स्पष्ट अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। राजस्व अभिलेख में नगरीय अतिशय शासकीय दर्ज भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का उत्तर तहसीलदार का आता सोएंसो के। Now, bare reading of this paragraph, Your Lordship, the possession is already been taken, Your Lordship. In terms of Your Lordship, the order which has been passed by Your Lordship, the inquiry has been conducted, Your Lordship, and it has been found that Your Lordship, the land has been in possession of the state government. Sir. Sure. My lord, there's one more judgment which answers my friend's contention. As far as the judgment is concerned, my lord, tomorrow I will discuss. This is WP number 1426 of 2011. 1426 of 2011, my lord. Again, a identical situation. Accordingly, the paragraph 16 reads, my lord. Accordingly, the proceedings initiated by the respondents under the provisions of the Act of 1976, while revenue case numbers so-and-so and possession case number so-and-so are held illegal, as it is apparent that the respondents have not followed and complied the mandatory requirement while initiating such proceedings, nor have they taken possession of the land in question by adopting due process of law. That apart, admittedly, the physical possession of the land of the petitioner has not been taken over by the respondents, and therefore the possession in view of the order passed by the competent authority, respondent number 3, White Order dated 9/12/2010, treating the petitioner to be an encroacher, cannot be held to be unauthorized. Accordingly, the order passed by the respondent number 3, 9/12/2010 is hereby quashed, and the respondents are directed to correct the necessary entries in the revenue record showing the name of the petitioner as owner of the land in question, which is said to be vested in the state by virtue of the above referred sealing proceedings and have been held to be illegal. Let the aforesaid exercise be completed within a period of 3 months from the date of submitting the certificate copy. Sir. Identical situation, my lord. License. Item number 11, Sri Pranay Shukla. Your Lordship. जी सर. In that case, Your Lordship, appeal is pending. तहसीलदार के न्यायालय से 3 बार रिकॉर्ड बुलाया गया लॉर्डशिप, लेकिन रिकॉर्ड नहीं पहुंच पाया है. आज भी उस अपील में डेट लिस्टेड थी योर लॉर्डशिप. आज लगी थी? आज लगी थी योर लॉर्डशिप. तो ठीक है, उसको 15 दिन के अंदर डिसाइड कीजिए. टिल देन सर 30 डेज करके स्टेटस को कर दें. 30 डेज करके स्टेटस को कर दें. उसमें सर मुरम वगैरह पड़ी हुई है, ऐसा कुछ रोड कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ जैसा बोल रहे हैं. हाँ. तो 30 दिन में ही विल टेक अ डिसीजन. ठीक है. 20 स्टेटस को नहीं यार, वो स्टेटस को में तो प्रॉब्लम हो जाएगी. वो फिर आप बोलोगे कि नहीं, फिर ये बोलेंगे कि हटा. नहीं सर, हम नहीं हटवाएंगे, लेकिन स्टेटस को ऑर्डर नहीं किया जाए योर लॉर्डशिप. 30 दिन में उनको डिसाइड करने के लिए. शासन एक व्यक्ति से कब से डरने लग गया? शासन तो सभी से डर रहा है. सभी से डर रहा है मतलब है? शासन तो सर मैं ही कह रहा था कि उसमें जो मेरे आप कह रहे हैं जो रास्ता है वो बहुत मतलब ऐसे ही उबड़ खाबड़ टाइप का रास्ता, उसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा. आपने कहा कि फिर ये कहेंगे कि साहब वो हटाओ. आप कब से डरने लग गए? स्थिति आप कब से डरने लगे? पूछा मैंने. पूछ नहीं सकते क्या है सर? यथा स्थिति सर मेरा एक. अच्छा ठीक है. 20420 2023. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed against the order dated 19/5/2023 and 23/5/2023,
asked by respondent number 3 in revenue case number 62/B-121/2023-24, by which the land of the petitioner, by which a road has been directed to be constructed. It is submitted by counsel for the petitioner that the Tehsildar, without issuing any notice to the petitioner, has directed for construction of a road on the land belonging to the petitioner. However, it is fairly considered that against the aforesaid orders, the petitioner has already approached the SDO, Revenue Narmadapuram, Revenue Narmadapuram, by filing an appeal. It is submitted by counsel for the petitioner that on 3 occasions the record from the court of Tehsildar has been requisitioned, but the record from the court of Tehsildar has not been received by SDO Narmadapuram. Therefore, the case is getting adjourned. Next, the only contention of counsel for the petitioner is that the road has been directed to be constructed over the land belonging to the petitioner, and before passing such an order, the Tehsildar has not issued any notice to the petitioner. The petitioner has pointed out has filed the order sheets of the Tehsildar, Khedi Savligarh, which shows that on 9/5/2023, the case was taken up for the first time, and on ये क्या 23 है? 23, yes, your lordship. That on 19/1/19, on 9/5/2023, the case was taken up for the first time. 19. 19 है? Yes. यार ये खोलो यार जरा इसका टैग। बीच के टैग खोलो यार, बीच के टैग। अरे पूरा मत खोलो। ये 9 दिख रहा है वैसा? सर वो फोटोकॉपी में ऐसा हुआ, वो 19 है। मैं तो ट्रू कॉपी, अच्छा 19 है। Yes, your lordship. और दूसरा क्या 23? 23. But on 19/5/2023 bracket में, although the it appears from the photocopy that it is 9/1/23, the case was taken up for the first time, and the case was, and on the next date, that is 3/5/23. That is on 23/5/23, although from the photography it appears 3/5/23. नहीं हो ही नहीं सकता यार। 19/5/23 and 23/5/23, the final order was passed. Thus, it is clear that the entire proceedings were done behind the back of the petitioner. क्या ऑर्डर क्या हो गया था? इससे पहले का देखो। Heard the counsel for the parties आ गया है क्या? नहीं अभी नहीं। The per contra, the petition is vehemently opposed by counsel for the state. It is submitted that once an appeal against the order dated 19/5/23 and 23/5/23 is pending before the SDO Narmadapuram, then SDM बैतूल है सर, ये कुछ गलत बता रहा है। SDM बैतूल का नर्मदापुरम SDM क्यों होगा? इन्होंने लिखा भी है तो SDM बैतूल ही लिखा है इन्होंने। तो SDM बैतूल, SDM नहीं होगा, SDO होगा। हाँ, SDO बैतूल कर देना, and therefore the parallel proceedings may not be initiated. Heard the learned counsel for the parties. Now it is further submitted that
So far as the delay in disposal of the appeal is concerned, the SDO Vatul shall decide the appeal within a period of 30 days from today. Until then, the parties may be directed to maintain the status quo. Heard the learned counsel for the parties. Since the appeal is already pending before the court of SDO Vatul, but it is also the case of the petitioner that in spite of the fact that requisition on 3 occasions were sent to the Tehsildar for sending the record, but the same has not been received. Coupled with the fact that the Tehsildar has passed the order dated 23/5/23 without issuing any notice to anybody, it is directed that the SDO Batul shall decide the appeal positively within a period of 1 month from today, that is 20th of April 2024. Until then, the parties are directed to maintain the status quo, and the land in question shall not be used as a road. सर उसमें तो पब्लिक यूज कर रही है तो आप पैसे दे दो इनको, एक्वायर कर लो, कौन मना कर रहा है? एक्वायर कर लो ना, कौन मना कर रहा है? आप ये बताइए, चलिए आपको लग रहा होगा मेरी बात गलत है। नहीं गलत नहीं है। गवर्नमेंट किसी की प्राइवेट लैंड को कैसे हथिया सकती है? सर इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स मेरे को भी क्लियर नहीं है। आपको भी नहीं है, हमें भी नहीं है, इन्हें भी क्लियर नहीं है। अभी आप मुझे ये बताइए कि कहाँ तहसीलदार ने लिखा है कि ये शासकीय भूमि है? लिखा है क्या? ऑर्डर से समझ में नहीं आ रहा। ऑर्डर से नहीं समझ में आ रहा ना, मतलब तहसीलदार को भी नहीं मालूम। जब तहसीलदारी को नहीं मालूम है तो फिर अभी हमको तो सब कुछ रोकना ही पड़ेगा ना। लेट हिम डिसाइड ऑन। ये तो बताओ, तो फिर वो अपील भी खत्म करके ही निपटा दें इसको। नहीं सुनवाई। चल पारितोष जी, आज एक और रेस्टोरेशन लगी, सभी हम हड़ताल पे थे। अब हम पूछ रहे हैं हड़ताल सही है? सब बार काउंसिल ने बोला था सर, हम तो हड़ताल पे थे। 7 पन्ने की एप्लीकेशन और उसमें मात्र रेस्टोरेशन के लिए आधा एक पैराग्राफ की हम हड़ताल पे थे। तो हमने कहा बताओ भाई, बताओ क्या करें? फिर उनको ऑप्शन तो दिया है कि किताब जमा करो, तो बाहर को दो, बट तो बेस्ट ऑप्शन नहीं, हमने अडॉप्ट भी किया है ना, बाकी केसेस में भी तो किया। पहले तो कॉस्ट लगा रहे थे, उसके बाद चेंज किया था, पर वो हालात सुधर नहीं रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। अभी तक स्टेट बार का ही कोई स्टेट फॉरवर्ड स्टैंड अभी तक नहीं आया कंटेंट पे, उनका आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी तक सर देखिए, जब हमने ये कहा कि ठीक है बार को आप बुक्स डोनेट करो, हम रेस्टोर कर दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आदमी अपना आर्ग्यूमेंट्स तो मोल्ड करे, उसको जस्टिफाई करें। अब वो स्टिक कर रहे हैं कि साहब हम तो हड़ताल पे थे, तो हम क्या करें? एक ऑर्डर और हुआ है आज सिवनी बार में, हैं? सिवनी बार का एक ऑर्डर और हुआ है आज। अब जो भी हो, फिर अल्टीमेटली मेरे को ही बोलना पड़ा कि यार तुम किताबों दो। फिर मैडम ने कुछ किताबें बताई हैं, आ गई हैं, चलो भैया उसको रेस्टोरेशन दे दो, ऑर्डर रेस्टोरेशन का। Two 222873/2023, Shri Chandra Bhushan Tiwari, counsel for applicant. This application under section 482 of CRPC has been filed for restoration of MCRC number 59073/2021, which was dismissed in default on 28th of March 2023. It is submitted by counsel for the applicant that on account of the call of strike given by the Bar Council of State of Madhya Pradesh, he did not appear. It is further submitted, although it is not pleaded in the application, but it was submitted that under the compulsion he did not appear, therefore it was not a voluntary absence on his part, and he may be excused for the same so that the litigant may not suffer. It is further submitted that he is ready and willing to
donate books to the bar association, so to the bar association for the benefits of the for the benefits of the advocates. MP High Court Bar Association. MP High Court bar, वो तो सब यहाँ है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है मैक्सिमम, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है. नहीं सर, आप ग्वालियर में देखिएगा, आपको हर वहां पे तो ये तो उसमें हुआ. वहां पे जब हम गए थे, आई फाउंड कि हर कोर्ट रूम में रखी हुई हैं. मैं पूछा ये क्यों, कितनी किताबें क्यों हैं? And I was told कि सर these books have been donated by the bar members for the benefit of the bar members. यहीं पे रहती हैं, जिसको कंसल्ट करना है, पढ़ना है, रेफर करना है, यहीं रखते हैं और यहीं रहती हैं. बट कस्टडी ओनरशिप इज ऑफ द बार, वो कोर्ट की नहीं है. मतलब आप रोज रात को बार में ले जाएं और सुबह लाके रखें, ये भी कर सकते हैं. हाँ हाँ हाँ, देखो मिल गया. पैराग्राफ 32. Probably my lord, that such direction cannot be फिर क्या कर रहे हैं? fairly considered. My lords, may I kindly dispose of in this light. ये वाला नहीं, आपका केस ये था कि दिसंबर में आपकी सेक्शन 10 की एप्लीकेशन पे हियरिंग हो गई है, बट स्टिल द ऑर्डर हैज नॉट कम. ये है आपका. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देयर आर गाइडलाइंस बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल ऑर्डर दैट विद इन हाउ मच टाइम द जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड, एंड इफ इट इज नॉट डिलीवर्ड देन व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू द लिटिगेटिंग पार्टीज. ये तो आपका वो दूसरा वाला है कि वो जनरल डायरेक्शंस नहीं होने चाहिए. To decided in fixed time on manner that. यस, वो मैंने कहा, वो जब तक आप नहीं दोगे हम नहीं करेंगे. इसमें कंसीडर किए हैं उसमें पॉइंट में कि इन जनरल केस में ऐसे डायरेक्शंस नहीं थे. सर देयर इज अ स्पेसिफिक जजमेंट that after the case is heard, the judgment must be delivered within this much of time. Otherwise, the litigants would have this right. That I will get the judgment. वो देख के बताइएगा, कल सुबह बताइएगा. मुझे मालूम है, मैं आपसे मेहनत इसलिए करा रहा हूँ कि आज के बाद से अगर आपने ढूंढ लिया तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा. और मैंने लिख दिया तो आपने ऑर्डर पढ़ना भी नहीं है ना. I got this. वो भी ये अच्छा है, आपको कम से कम अब याद रहेगा, पर उसमें आप वो ढूंढ के दीजिए. देयर इज अ जजमेंट इन योर फेवर इन विच द गाइडलाइंस हैव बीन लेड डाउन दैट विदिन दिस मच ऑफ टाइम आफ्टर हियरिंग द केसेस द जजमेंट हैज टू बी डिलीवर्ड. I will get it. With the consequences that what rights will accrue to the litigating party, whether they can move an application for release of the order case, whether they can move an application for urgent hearing, this and that, वो है उसको ले. Get it today. Tomorrow 10:59. हाँ, आप दे दीजिएगा सर. Item number 79, Shri Dharmendra Soni. My lord, we have kind perusal of the order sheet dated 15th of March. सर आपने जिस पर्पस के लिए इंस्ट्रक्शंस बुलाए थे और उन्होंने जो सबमिट अभी किया उसमें है ही नहीं सर इंस्ट्रक्शंस. क्या इंस्ट्रक्शन? इसमें आपने ये बोला था कि शॉर्ट कंट्रोवर्सी जो है वो है whether the letter of interest has been issued under the orders of committee or under the order of collector. ये जो पेपर से प्लेस कर रहा सर इसमें तो कुछ है ही नहीं. मतलब तो कमेटी ऑलरेडी गठित हो गई. 1.2.2 में तो कमेटी ऑलरेडी गठित है और जो हुआ है वो कमेटी के मेंबर्स ही थे, अध्यक्ष और क्या किया है सदस्य सचिव. पता नहीं, मैंने देखा नहीं. सोनी जी कह रहे हैं कि इसका कुछ नहीं हुआ है सर. इसमें और अलग से कोई पूरी गाइडलाइन फोरम नहीं है कि हम अलग से कमेटी करेंगे. ऑलरेडी कमेटी गठित थी और कमेटी के मेंबर्स. मैडम वो नोटशीट कौन सी है जिसमें कमेटी के मेंबर्स ने लेटर ऑफ इंटरेस्ट इश्यू करने का ऑर्डर किया? बस ये नोटशीट्स लगी हुई हैं. आप उसमें मार्क कर दो ना. नहीं है सर. अरे सोनी साहब, डब्ल्यूपी का जो ऑर्डर हुआ था है ही नहीं. मैंने देख लिया सर, मैंने इसलिए एक्स्ट्रा साइड करा. डब्ल्यूपी का जो ऑर्डर हुआ था सर, उसके उस डब्ल्यूपी के ऑर्डर के कंप्लायंस में नोटशीट चली है. उसके बाद ईओआई का इशुएंस हुआ है. और जो कमेटी तो वो नोटशीट किसकी है सर? ये नोटशीट्स लगी है ना सर? अरे लगी तो होगी, किसकी है सर? वो जो डब्ल्यूबी का ऑर्डर हुआ था उसकी कंप्लायंस पे फिर नोटशीट किसकी है? कमेटी की है कि किसकी है सर? वो गाइडलाइन फाइल और रिटर्न में देखते हैं. 4571/2024 it is submitted by Shrimati Swati Asim George
that instructions have been received and may be granted a week's time to file return time granted list on 2nd of April 2024. Sir, interim protection continues. अरे कुछ नहीं हुआ। Mr. अच्छा हाँ, interim leave granted on earlier occasion shall continue till 2nd of April 2024. Obliged, deeply obliged. Password cases item number 5. Shri Subodh Kumar Pandey. Not in this case, जी पांडे जी। petitioner holding a stage carriage vehicle, my lord. Bearing number, my lord, MP 28P 0281. 281 जी। Yes, my lord. This vehicle has made an accident, my lord, in earlier, my lord. Before the jurisdiction of Patna Court, my lord. Thereafter, तो क्या हो गया था? कुछ मरमरा गए थे, क्या हो गया? हाँ सर, 279 304A, my lord. अरे तो कितने की डेथ हुई थी वैसे? एक ही की, मेरे ख्याल से एक ही के सर। बस एक ही आदमी मरा? हाँ एक ही के। Thereafter, the operator obtaining the vehicle on Supurdagi Nama, my lord. Not at present, my lord, the petitioner seek the permission, my lord, before the GMFC, my lord, to operate the bus. No, sell out the said vehicle, my lord. Because that vehicle is 2012 as well as the money crisis there, my lord. Therefore, my lord, the Chief Judicial Magistrate, my lord, rejected the application of the petitioner, my lord. He not give the permission, my lord. कैसे दे सकता है सर वो? My respectful submission, my lord, हम बस को नहीं बेचेंगे, कलर नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो my respectful submission, my lord, कि the solvent security of amount of the Supurdagi Nama has been deposited, my lord, before the GMFC, my lord, and grant the permission, my lord. ऐसा बस कैसे उसमें सुपुर्दनामे में ये भी लिखा है कि अब बस को आप बुर्द भी नहीं करेंगे। इसीलिए तो परमिशन मांगी सर। अब आप ये बताइए कि जेएमएफसी अगर परमिशन देता है तो अपने ही ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहा है, और क्या वो ऑर्डर चेंज कर सकता है? सर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर कैसे कर सकता है? सीआरपीसी के हिसाब से बता दीजिए ना। आप इतना बता दीजिए कि सीआरपीसी के फलाने प्रोविजन के हिसाब से वो ऑर्डर मॉडिफाई कर सकता है, मैं अभी करवा देता हूँ। सर आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल। नहीं एग्जांपल नहीं चाहिए मुझे, सेक्शन चाहिए सर। सर सपोज ए व्हीकल मेट एन एक्सीडेंट एंड भाई साहब देयर माय लॉर्ड, भाई साहब अपन जनरल बात नहीं कर रहे हैं, आप मुझे तो कानून लिखना पड़ेगा ना सर। इसमें 15 लाख का सुपुर्दगी नामा। अरे आप तो 4 लाख का छोड़िए, 4 करोड़ की दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वो मॉडिफाई कर सकता है, बस इतनी सी बताइए। 15 लाख का सुपुर्दगी दावा था, 15 लाख रुपए कैश जमा कर दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। डिफिकल्टी है कि क्या एक मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर सकता है, इसके ऊपर बहस कीजिए। अगर कर सकता है तो करवा देते हैं सर। अदालत प्रसाद वाला जजमेंट क्या कहता है सर? सर जी अदालत प्रसाद वर्सेस स्टेट क्या कहता है? वो नहीं देखा सर मैं। तो फिर जब आपने क्रिमिनल का देखा नहीं, सीआरपीसी देखी नहीं और क्रिमिनल पे बहस कर रहे हो, कैसे कर देगा यार? अच्छा 362 देखिए जरा सीआरपीसी। कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट। तो कैसे कर देगा सर? सर ये जजमेंट मेरा रिस्पेक्ट है, ये जजमेंट नहीं था, इट इज ए इंटरिम ऑर्डर। अच्छा इंटरिम कस्टडी में दिया हुआ है अभी एज ए सुपुर्दगी नामा। बस फिर जल्दी से अपना ट्रायल खत्म करवा लो सर। हाँ मैं वही बताना चाह रहा था सर, इसमें मैंने ऑर्डर शीट लगाई, काइंडली सी दी ऑर्डर शीट में पेज नंबर 20। अच्छा उसमें क्या लिखा है? जजमेंट लिखा है कि ऑर्डर भी लिखा है?
जजमेंट ऊपर हेडिंग में पड़ी जजमेंट ही। अरे हेडिंग से मत जाया करो। जजमेंट्स और फाइनल ऑर्डर और जजमेंट और फाइनल ऑर्डर जी ऑर्डर्स होती है, फाइनल ऑर्डर। अच्छा 451 की कार्रवाई अभी में और क्या कार्रवाइयां बची हैं सर? 451 की देखिए जजमेंट और फाइनल ऑर्डर दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब दोनों का अलग अलग मतलब है। और 451 की एप्लीकेशन जब डिसाइड हो जाती है तो अब और कौन सी कार्रवाई करनी है उसमें, जिससे कि उसको हम इंटरलोकेटरी कहें। दैट इज फाइनल, दैट इज फाइनल। बस हो गया आपका आंसर। सर इसमें काइंडली सी एनेक्चर पी। अरे मैं भैया अगर वो मॉडिफाई नहीं कर सकता तो क्या करे वो? नहीं सर, मैं ये दिखाना चाह रहा था सर। अरे बहुत अच्छा देख लिया आप तो 1500 ना, हम तो आपसे 25 लाख रुपए कैश जमा करवा देते हैं वहां से। नहीं सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि 2022 सर 15/12/2022 से सर प्रोसिक्यूशन के विटनेस के लिए लगातार सम्मन्स बेलेबल वारंट, ये तो स्वप्निल गांगुली जी से बताओ वारंट इशू हो रहे सर। आप तो आज तक नहीं आया सर। मैं ये सर बोल रहा था। आप तो गांगुली जी से मिलो। काइंडली सी एनेक्चर P3 मिलॉट। आई एम इंक्लूज द ऑर्डर शीट ऑफ द कोर्ट। गांगुली जी से मिलो, वो बताएंगे कैसी पिटीशन फाइल करनी है, तो सब विटनेसेस आ जाएंगे। आपने प्रेयर है कि हमारे विटनेसेस को जल्दी, हमारा ट्रायल जल्दी खत्म कराया जाए? नहीं है। नहीं सर, एनी अदर ऑर्डर। हाँ बस एनी अदर ऑर्डर में थोड़ी होता है। गांगुली जी कहना मैं सुसाइड करने वाली कोई सजेशन नहीं दूंगा जो मेरे खिलाफ हो जाए। सर मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं ये बताओ सर। ट्रायल जल्दी खत्म हो सर 2022 से सर प्रोसिक्यूशन का एक भी विटनेस नहीं आया सर। स्टार्टिंग में आप देखें सर एनेक्सर P3 पे। अरे भाई आप प्रेयर तो कर दो ना, छोटी सी पिटीशन तो फाइल करो। सर टिल आज ये पेज नंबर 22 में देखें सर। देख लिया ना। गिरफ्तारी वारंट जारी हो किंतु कोई नहीं आ रहा। गांगुली जी को मालूम है कि आप कैसी पिटीशन फाइल करेंगे तो सब हो जाएगा। सर गवाह का कब आएंगे ये बताओ, कैसे आएंगे जरा इनको बताओ। सुबोध जी को भी बेचारे इस इनका क्रिमिनल साइड की फील्ड नहीं है। इनका कहना आधे घंटे पहले आते, अभी तक तो गवाह वहां पहुंचे होते, खड़े होते। साहब 1 महीने बाद हमारी गवाही अभी से आ गए, ऐसा है क्या? सिवाय सरकारी वकीलों को छोड़ के कोई नहीं हंस रहा है। Any sir, he can't modify the order. That is 1266 only 2024. So it's about partition. Swapnil Ganguly. It is submitted by counsel for the applicant that the bus of the applicant bearing registration number MP 28 P0281 met with an accident and accordingly it was released on Supadginama. The petitioner is in need of money, therefore he wants to alienate the same, and accordingly he made an application before the trial court to grant permission to sell out the bus. However, by the impugned order, the trial court has rejected the application. It is submitted by counsel for the applicant that the applicant is ready to furnish cash, bank guarantee, solvent security, or solvent security. उसमें पैसा जमा ही होता है। Yes, yes. First, consider the submissions made by counsel for the applicant. The counsel for applicant was directed to address this court as to whether the magistrate could have reviewed its own order dated 27/8/2022 by which, while granting the bus on Supurdighinama, the trial court had restrained him from alienating the same.
It is submitted by counsel for the applicant that petitioner that in view of the changed circumstances, the magistrate can pass an order. However, in the light of section 362 of CRPC, it is fairly considered that the magistrate cannot cannot alter the judgment or final order except to correct the clerical and arithmetical errors. Well, it's just it is further submitted that the witnesses are also not turning up, and therefore, on one hand, his bus is lying idle, and on the other hand, the trial is getting delayed. So far as the delay in trial is concerned, the petitioner has not prayed for a direction to the court for early disposal, be that whatever it may be. Since no case is made out by the applicant to alienate, warranting the necessity to alienate the bus, this court is of considered opinion that no jurisdictional error was committed by the trial court by rejecting the application. The application fails and is hereby dismissed. Number 10, MS Durgesh Thapa. जी मैडम, वो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है? Yes, my lord. My lord, I beg my apologies क्योंकि ये डायरी नंबर से निकला है, इस केस नंबर से। कोई बात नहीं, हमें तो ऑर्डर से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है, केस नंबर से मतलब नहीं है। Lordship, the order was passed on 15/11/2019, and I prayed before the Honorable Court for the relief claimed in this petition is ill-advised. The special leave petition and pending applications are dismissed. The petitioner is free to pursue appropriate remedy as may be permissible in law. Yes, ma'am. ये कौन सी आपने SLP किस ऑर्डर के केस? My lord, ये SLP नहीं, हमने WP फाइल की। WP फाइल की थी डायरेक्ट। डायरी नंबर, हाँ, उसमें आपको जो दिया पीछे लिखा है, डायरी नंबर इज WP सिविल 11158/18। इससे डाउनलोड हो रहा है माय लॉर्ड, इससे हो ही नहीं रहा। पहले ये ऑर्डर पास हुआ था WP में, बाद में माय लॉर्ड ये 2 दिन के, जब हमने इसकी सर्टिफाइड कॉपी तुरंत ही दे दी थी उनको। मैडम, केस क्या था वो बताइए मुझे आप। जी, केस क्या था सुप्रीम? यस माय लॉर्ड, हम बताते हैं। माय लॉर्ड, आई वाज नॉट द काउंसिल इन सुप्रीम कोर्ट। मैडम, आई एम लिस्टिंग। माय लॉर्ड, इन बिफोर देयर वाज पंच फैसला फैमिली अरेंजमेंट व्हिच इज सबमिटेड एज Annexure 1 and 2. My lord, based upon this Panch Faisla, each and every court, from civil court to high court, passed order in our favor. My lord, but in Supreme Court, they forced this Panch Faisla. They forced the Panch Faisla. There, A1 is the forced Panch Faisla. In page number 18, may kindly be seen, para number 5. There is written that leaving the share as described above out of house number 512 Kotwali ward, the eastern portion of the remaining house which is shown in yellow color as per map is given to the share of SHRI Fulchandji, and the western portion as per map which is shown in green color. My lord, the actual wording is that is A2. That is the correct Panch Faisla. That is, my lord, may kindly be seen that leaving the share as described above out of house number 512 Kotwali ward, the eastern portion of the remaining house which is shown in the blue color as per map. My lord, here is written yellow color. My lord, the counsel of the respondent shown that the respondents having the right on portion yellow. Why there is not yellow color portion overall, and the decision was passed ex parte, not any information to petitioner. That's why we filed the upon based on this. तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के केस में हाई कोर्ट में हैं? No, my lord, हम सुप्रीम कोर्ट में ही गए WP में। तो सुप्रीम आप मैडम, यस my lord,
आपका कहना है पंच फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किया गया था फोर्स था मतलब सुनिए और फोर्स्ड पंच फैसले के आधार पे सुप्रीम कोर्ट से एक्सपार्टी ऑर्डर ले लिया Petitioner was not aware of that order. That's why we filed WP before the कोई Supreme. बात नहीं मैडम, आप चाहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड No, my lord. तो क्या करूं? No, my lord. I don't think like that. Further, I am submitting, my lord, because the petitioner was neither a party in that proceeding because he was minor. And my lord. मैडम मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मैं क्या करूं ये बताइए. Yes, my lord. That's why I am submitting. My lord, there is citation of Supreme Court of 2003 that even after dismissal, SLP order of SLP proceeding can be provided if the person was not party. मैडम हाई कोर्ट में कैसे आएगा फिर ये बताइए मेरे को. मैं हाई कोर्ट इसलिए आएगा कि वो कभी पार्टी नहीं था, वो हाई कोर्ट में कभी आया नहीं. और कोई कोर्ट्स नहीं है क्या? सिविल सूट फाइल कीजिए. मैडम मैं क्या करूं, मैं क्या ये लिखूं कि भाई चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं था इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. If the petitioner was minor and there. मैडम मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों में से क्या पिटीशनें फाइल हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में. If you were aggrieved by an order passed by the Supreme Court, what remedy was available to you to file? No. Yes, what do you mean by no? According to the compliance. Madam, please try to understand the things. You are unnecessarily wasting my time. If some order has been passed, you should have filed an application for review, recall, whatever is available. You filed a WP in the Supreme Court against the order passed by the Supreme Court. Already filed. In that WP order has been filed. Madam, sorry. My lord, WP I have filed before the Supreme Madam, Court. आप समझने को तैयार नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता. I am helpless. My lord, WP number is there, my lord. Madam, I am helpless if you are not ready to understand the things. WP and that WP the direction was. Madam, I am helpless if you are not ready to understand the things. Already in WP, in Supreme Court, the order has been passed. Fine, madam. You were. Because petitioner was neither a party. Madam, कानून समझ लीजिए पहले अच्छे से. My lord, I have filed the citations regarding. Yes, I know the citations. Don't worry about that. You filed a writ petition before the Supreme Court challenging the order passed by the Supreme Court. No, I have not challenged. I have only said submitted before the Honorable Court that I was neither a party. So I have a right to file appropriate remedy separately. That's why Supreme Court ordered me you file appropriate bench. I want only direction because I submitted before the Honorable Court. I have not challenged any SLP. I have only said no, my lord, I have my right on my ancestral property. I am grandson of Duli Chand. And I have any property. If I have no remedy, I will deprived of my ancestral property. That's why I filed WP because forcibly they acquired the that order. The पंच फैसला कौन सा ऑर्डर फोर्सली ले लिया उन्होंने? माय लॉर्ड A1 जो है वो फोर्स्ड उन्होंने पेश किया है पंच फैसला. और मैडम मुझे समझाइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा. No, sorry, my lord. आप तेजी से मत चलिए. No, my lord, I beg my apologies. Don't. There is no question of apology. Madam, please let us move very slowly. My lord, madam, please. Yes, ma'am. आप सबसे पहले बताइए ये झगड़ा शुरुआत कहाँ से होती है? my lord, झगड़ा शुरुआत ये हुई कि इनका पंच फैसला ये हुआ. 3 भाई थे. पंच फैसला हो गया? नहीं, पंच फैसला हो गया. अकॉर्डिंग टू पंच फैसला जो दूलीचंद थे वो फूलचंद जो बड़े भाई थे बुद्धूलाल, उसके बाद फूलचंद, उसके बाद दूलीचंद. हम दूलीचंद के ग्रैंडसन. तो माय लॉर्ड ये हुआ पंच फैसला में कि बुद्धूलाल की जो पुत्री थी श्यामाबाई, उनसे फूलचंद ने लिया था डेप्ट 8,000 का. हम किसी लेने देने में नहीं है. तो उन्होंने ये कहा पंच फैसले में कि जब श्यामाबाई को 8,000 देंगे फूलचंद, तब क्या होगा कि उनको अपना हिस्सा मिलेगा. और तब तक वो दूलीचंद का चूंकि अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो वहां रहेंगे और उनके हिस्से. पंच फैसला के बाद क्या हुआ?
पंच फैसले के बाद क्या हुआ कि माय लॉर्ड वो उन लोग ने क्या किया, उनकी पंच फैसले में लिखा है कि वो रहने के लिए तो काफी जो रहने के ठीक लिए है, हुआ क्या फिर? वो बता रहे माय लॉर्ड कि उसमें बेच नहीं सकते, अल्टर नहीं, अब इन्होंने अल्टर करना शुरू किया तो हम सिविल कोर्ट गए दूलीचंद, सिविल कोर्ट गए। हाँ, ईच एंड एवरी फैसला इज इन आवर फेवर। यार कोई बात नहीं, सिविल सूट मैडम ध्यान से, यू आर नॉट ऑन अ पॉलिटिकल मंच वेयर यू कैन से वॉट एवर यू वांट। आपसे इतनी सी बात पूछ रहा है, आपने एक सिविल सूट फाइल किया जी, किसने सिविल सूट फाइल किया? आपने किया कि डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट्स ने किया? माय लॉर्ड हमने ये कहा कि हमारी प्रॉपर्टी ये, सिविल सूट किसने फाइल किया? माय लॉर्ड सिविल सूट हमने फाइल किया। आपने फाइल किया। उस सिविल सूट का क्या हुआ? वो क्या हमारे फेवर में गया, पंच फैसला हमारे फेवर, आपके फेवर में हो गया, फिर क्या उसके हुआ? बाद उन्होंने अपील में गया, वो डिसमिस हो गया। फर्स्ट अपील डिसमिस हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट गया, वो भी डिसमिस हो गया। सेकंड अपील भी डिसमिस। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने ये फोर्ज फैसला लगाया, पंच फैसला, एक्स पार्टी हमें कोई जानकारी नहीं, कर लिया। अब हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माय लॉर्ड ये सुप्रीम कोर्ट में आई वॉज नॉट द लॉयर, मैडम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको दे दो, अगर ये 8,000 देते हैं तो वो कौन सा ऑर्डर है? नहीं दिए। वो ऑर्डर कौन सा है? माय लॉर्ड ये ऑर्डर हम इसलिए नहीं निकाल सके, हमने रिट में भी बताया था कि माय लॉर्ड वहां सुप्रीम कोर्ट से हम ऑर्डर की कॉपी एक्वायर नहीं कर सकते। आई वाज नॉट द कॉन्सल, सम वर्मा वाज द। मैडम मुझे समझ में नहीं आता, सारी चीजें नेट के ऊपर अवेलेबल है, हर चीज मिल रही है। लॉर्ड हमने ये बात बताती है वहां पे, और हमने लिखा भी अपने, आपने लिखा? आपका नंबर क्या है उस केस का मुझे बताइए, मैं दे रहा हूँ आपको। अभी आप झूठ कह रहे थे कि डायरी नंबर से निकल रहा है। अच्छा, ये तो इसका केस का बता रहे हम, WP का जो SLP है उसका हम नहीं जानते मालूम। तो मैडम मैं क्या करूं? वो जो ऑर्डर हमारे सामने नहीं हो, आप उसके लिए मेरे पे बहस कर रही है? नहीं माय लॉर्ड हमको SLP से लेना देना नहीं, हमारे आपको नहीं लेना देना होगा, हमें लेना देना। नहीं तो माय लॉर्ड हमारे ये कहना है जो SLP हमारे अगेंस्ट में चली गई, हम रिव्यू भी नहीं लगा सकते उसमें, क्योंकि हमारे पास मुझे नहीं मालूम क्या कर सकते हैं। नहीं तो माय लॉर्ड हमारे ये कहना था, हम SLP को चैलेंज नहीं कर रहे, मत कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हम तो छूट गए उस प्रोसीडिंग में, हम तो कहीं पार्टी नहीं है, और आई एम ग्रैंड सन ऑफ दूलीचंद, तो मुझे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से कोई मिला ही नहीं, और न मेरे बाप दादाओं को मिला है, तो मेरा इस पे हक होता है, मुझे अलग से। आप SLP सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं माय लॉर्ड, हमको पता ही नहीं कि कोई SLP भी लगी थी। अच्छी बात है, जब SLP लगी नहीं थी आपको ये पता नहीं है, तो सेकंड अपील तो आप जीते हुए हो, फिर काहे की पिटीशन? नहीं माय लॉर्ड, तो हम तो हाई कोर्ट से भी जीते, वही तो कह रहा हूँ, सेकंड अपील तो आप जीते हुए। माय लॉर्ड उन लोगों ने क्या किया, वो हमको SLP की कोई कॉपी नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने वहां पे कब्जा करना चालू कर दिया है। मैडम SLP हुई कि नहीं हुई ये बताओ? SLP हुई, ये चीज की जानकारी हमको कौन दे रहे? पुलिस वाले दे रहे ना, अब उनको जानकारी दे रहे, कब्जा कर लिया, लेकिन हमको नहीं दे रहे कोई कॉपी। अच्छी बात है। और दूसरी बात हमारे आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो लगाई थी, बता दिया कि हम, यस माय लॉर्ड, उसकी कॉपी दीजिए मेरे को। उसकी कॉपी हम आपको दे देंगे। हाँ दीजिए ना। ये तो इधर पे नहीं है मेरे पास सुप्रीम, लेकिन मेरे पास डायरी नंबर है जो हमने फाइल किया। मुझे नहीं मालूम पिटीशन आपने फाइल की थी। 1115। You were the counsel in that petition? नो माय लॉर्ड, ये हम वहाँ AOR नहीं थे, लेकिन हमारे पास। अच्छा, आप आर्ग्यूइंग काउंसिल थे? तो आपके काउंसिल थे, उसमें हम डायरी नंबर बता सकते हैं, 1158/18, ये हम बता सकते हैं। और माय लॉर्ड हमने वहाँ, मैडम आपने बिना फाइल के आर्ग्यू किया था? नहीं माय लॉर्ड, हमारे पास फाइल थी। वो कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के लॉकर में है माय लॉर्ड, हम यहाँ लाया नहीं है उसको। आपके सुप्रीम कोर्ट के लॉकर में रखी है? हम ले आए। कोई बात नहीं, उसमें क्या बोला था आपने? उसमें हमने ये बोला था कि चूंकि माय लॉर्ड वहाँ ये नियम है कि जो वकील रहता है उसी को सर्टिफाइड कॉपी देते, किसी भी ऑर्डर की जानकारी हम नहीं थे, हमको नहीं मिलेगी वहाँ। आपने पिटीशन में क्या लिखा था? हमने ये लिखा था कि हम इसको चैलेंज नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि हम नहीं थे पार्टी, हमको अपने बाप दादाओं के ऐसे प्रॉपर्टी में हक है, हम प्रोसीड करना चाहते हैं। आई वॉज नाइदर ए पार्टी, all the proceedings and all the orders are in our favor from civil court to high court. ये बताया हमने उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब आप पार्टी नहीं थे तो हमने एक फैसला लगाया 2003 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आप कोई पार्टी नहीं थे तो अगर ऑलरेडी सिमिलर कोई SLP डिसमिस हुई, अलाउ हुई, तो आप अलग से कर सकते हैं। पहले SLP तो दिखाओ कौन सी खारिज हुई, अलाउ हुई। मतलब आप प्रोसीडिंग कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं आपका, आप न्यू कर सकते हैं, लगाया मैंने। उन्होंने ये कहा कि आप अप्रोप्रिएट कोर्ट में जाइए, तो ये इसीलिए हम यहाँ। एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट थोड़े है, एप्रोप्रिएट कोर्ट हाई कोर्ट थोड़े है। एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट कैसे हो गई ये बताइए? माय लॉर्ड, आई बैग माय अपॉलजीज, वो जस्टिस खानविलकर थे, उन्होंने कहा हाई कोर्ट जाइए 226 में, ऐसा कहा था, ओरली कहा था, ले लिखिए। मैडम आप हमसे माफी मत मांगिए, उनसे मांगिए कि जिनका नाम ले रहे हैं आप लाइव टेलीकास्ट के ऊपर। ठीक है ना माय लॉर्ड, उन्होंने कहा था ऐसा।
हमसे, और उन्होंने यहाँ लिखा तो वही लिख दिया, परस्यू अप्रोप्रिएट रेमेडी आप हाई कोर्ट अप्रोप्रिएट नहीं है जी। यस मतलब हाई कोर्ट इज नॉट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। चल देखता हूँ। Then my lord may kindly be directed किस बात की बनो? appropriate कोर्ट के लिए। Why should I? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो मैं मेरे ऑर्डर की क्या अहमियत है वहाँ पे? ओके हैं? मतलब मैं तो बड़ा एडवेंचरस काम करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर मैं भी अपना डायरेक्शन देना शुरू कर दूं। मैडम वी आर at least madam we are the said we are those persons who strictly believe in discipline. Yes lord. My lord, there is force. Madam my lord, there is madam please, apart from article 141 we are the persons who strictly believe in discipline, and once the superior court has already passed a direction, we are not supposed to pass any further direction of a similar kind, either similar or contrary to that. My lord, that's correct. My lord, my submission is that kindly be seen Annexure 6. Madam, reported before collector for this forgery. He has not taken any action. Madam, I am not supposed to guide you what action should have been taken by you. My lord, there is forgery. Yes, if some forged document has been filed, yes, then please try to search out the judgment that what is the remedy available to you. I am not supposed to tell. कल को आप भी हमारा नाम जो है धड़ल्ले में खड़े होकर बोलेंगे उन्होंने बोला था ऐसा करो। No, my lord, no, my lord. अभी तो आपने बोला अभी तो 26. I have heard you enough, please. My lord, the Madam, article 226. Madam, I have heard you enough, please. I have already observed that this is not an appropriate court. If you feel that some forged document has been filed, your remedy lies somewhere else. But I will not disclose the remedy. Otherwise, again, I will also be made a party by saying, sir, he had said like this and he had said like that. No, I don't want to involve myself. But the remedy doesn't lie. I will hold. The remedy doesn't lie to this court. Now, let's 515981/2023. MS Durgesh Thapa, Counsel for Petitioner. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by Counsel for Petitioner that on the basis of a Panch Faisala, the petitioner had filed a civil suit which was decreed, civil suit number 356-A/98, which was decreed in favor of the petitioner on by judgment and decree dated 21/1/1999. Thereafter, the first civil appeal filed by the respondent, civil appeal number 17A/1999, filed by the respondent, was dismissed by the appellate court by judgment and decree dated 10/2/1999. The second appeal number 889/1999, filed by the respondent, was dismissed by the High Court by judgment and decree dated 11/7/23. MC review petition number 3031/2003 was also dismissed by the High Court. मैंने शायद 11/7/23 लिखा दिया और 11/7/3 है. It is submitted that it appears that the respondent preferred SLP and in the said SLP filed a forged Panch Faisala. The petitioner was not noticed, was not heard, and on the basis of forged Panch Faisala, a judgment was passed by the Supreme Court. Being agreed by the said judgment, the petitioner preferred WP Civil number 1032/2019, which was dismissed by Supreme Court by order dated 15/11/2019, by holding that the relief claimed in the petition is ill-advised and the petitioner is free to pursue appropriate remedy as may be permissible in law.
It is submitted that since the petitioner had obtained an order from the Supreme Court in SLP, therefore, this court is the appropriate court for directing for the reliefs claimed by the petition. Heard the learned counsel for the petitioner. This court has already reproduced the reliefs which have been claimed by the petitioner. There is not a single whisper with regard to taking of any action with regard to the Panch Faisla, which is alleged to be opposed by, which was being alleged by the counsel for the petitioner as opposed by. This court cannot reopen the order passed by the Supreme Court by entertaining its power under Article 226 of Constitution of India. Furthermore, the petitioner has also not filed the copy of the SLP, which was allowed by Supreme Court in favor of the respondent. The petitioner has also not filed the copy of the writ petition, which was registered as WP Civil number 1032/2019. So under these circumstances, this court is of the considered opinion that the petition filed by the petition is misconceived and cannot be entertained by this court for the system. Accordingly, the petition fails and is hereby dismissed. Number 12. 3. Gaurav Pathak. Ji, sir. So this is an application under section 482. And FIR. सर ये नंबर 1 और नंबर 2 का रिलेशन बताएंगे? सर नंबर 1 जो हैंगे सर वो हस्बैंड है सर. नंबर 2 फादर है सर. 498 है. यस सर. सर FIR कौन सी है सर? सर पेज नंबर 57 पे है सर. Annexure. Annexure was sir, page number 57 sir. And FIR sir, allegation was made. Just a minute, मुझे कागज पे हाथ तो जाने दीजिए सर. जी सर. Sir, allegation was made by this lady, my lord, against his husband. That by his this lady, my lord. Lady मतलब wife sir. अच्छा मतलब इतनी ज्यादा दुश्मनियां हो गई हैं. No sir, the allegation. डाइवोर्स हो गया है क्या? No sir. Section 9. वो वाइफ से लेडी हो चुकी है. चलिए. Listen, Section 9 was moved by his husband, my lord. Then अरे नहीं मैंने वैसे ही पूछा. वाइफ से वो लेडी बन चुकी है. शादी कब हुई थी? 22/5/2023 को कटनी में. आज दिनांक 14/12 को बाजार तभी 11:30 बजे दोनों भाई किसी घर से आके नावेदक और नावेदक इलाज के लिए सर. तूने मेरी शिकायत परिवार परामर्श केंद्र की है. मैं पेशी में नहीं आऊंगा. तुम्हें जो करना है कर लो. मैं अपने इलाज के लिए 4 लाख तो दहेज के दोगी तभी मैं ले आकर जाएंगे. नहीं तो तुम यही सड़ना. मारपीट शुरू कर दी. बाल खींचे जिस पर मेरे माता पिता जो थे बता को बोला. माँ बहन को गंदी गंदी गाली दी. जान से मारने की धमकी दी. दोनों भाई आए. आज तो बच गई. नहीं तो तेरे को मार डालेंगे. अपने ससुराल से मायके अपने आ गई थी क्योंकि नावेदक क्रमांक को शायद इसका इलाज करवा रहा था जिस कारण से ने उसे सरसे देकर भगवा दिया था. इसके बजाय के ने मेरी खोज खबर नहीं ली. मुझे संपर्क किया. जो 2 और 1 ने किया है. जी सर. अब आप क्या कह रहे हैं किस ग्राउंड के ऊपर? सर एक्चुअली एलिगेशन वाज मेड बाय हिज वाइफ दैट इलाज के लिए पैसे मांगे गए बिकॉज द पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट ऑफ परफॉर्मिंग द सेक्स. सर आई हैव फाइल्ड ऑल द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग दैट व्हिच मैं इस एलिगेशन को झूठा साबित करूं ये आप चाहते हैं सर बिकॉज तो मुझे ये बताइए 482 में मैं ऐसा कर सकता हूँ. बस इतना सा बता दीजिए मैं तुरंत कर देता हूँ. सर बट द लेडी इज आस्किंग. बट नहीं सर. मेरे जुरिसडिक्शन के ऊपर प्रश्न चिन्ह मैं अपने आप लगा रहा हूँ. आपके किसी भी आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है ना. तो अगर आपके आर्ग्यूमेंट में प्रश्न चिन्ह लगाऊं तब तो आप रेजिस्ट करो. मैं तो आपकी बात सब मान रहा हूँ पर मैं ऐसी फाइंडिंग दे सकता हूँ 482 में. ऐसा कोई जजमेंट बता दीजिए.
482 का स्कोप बताएं सर। of FIR in this. 482 का स्कोप FIR में थोड़े मिलेगा। Extra jurisdictional powers of the High Court, sir. हाँ, तो क्या मैं पूरी मिनी ट्रायल कर सकता हूँ क्या? No, sir. नहीं कर सकते। उसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, ये बिना ट्रायल के मैं कुछ पे निर्णय दे सकता हूँ क्या? No, sir. But sir. बस सही आंसर है, बट तो छोड़िए। नहीं सर। अब आपकी दस्तावेजों को सिद्ध मान के क्या मैं उनको जुडिशियल नोटिस ले सकता हूँ क्या? क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं? मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? एविडेंस एक्ट की तरह एविडेंस एक्ट में तो उनको प्रूव करना पड़ेगा। That was not a project. फिर ये प्रॉब्लम है। तो आपकी किसी भी बात पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, परंतु मैं आपकी बात को सत्य है कि नहीं ये तय अभी नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करना है सर? 10554/2024. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for applicant seeks permission of this court to withdraw this application with liberty to raise all possible defenses which may be available to him in the trial. Available to them in the trial. With the full liberty, the application is dismissed as withdrawn. Item number 14, Shri Kamalbhar Vishwakarma. रूपला साहब, कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगर ज्यादा स्मूथ चलती हैं तो वो भी नींद आती है सर। मैं वैसे भी ओवर टाइम करवा रहा हूँ सर, खुद भी कर रहा हूँ, आप लोगों से भी करवा ही रहा हूँ सर। प्लीज नंबर 14, Shri Kamalbhar Vishwakarma. None for the applicant even in the second round. Accordingly, the case is adjourned list after 8 weeks without any liberty to mention. Item number 22, Shri Rajendra Kumar Singh, Shri Pradeep Singh Chauhan. जी सर। So this petition under section 482 of CRPC are the requestment of the complaint case pending before the trial court. कंप्लेंट केस का क्वेश्चन है Lordship. 406, 506, 494, 300 सॉरी 34 राइट सर। Lordship. FIR कंप्लेंट क्या है सर? कंप्लेंट लॉर्डशिप ये है कि कंप्लेनेंट वाइफ और हस्बैंड जो है अंकुश वीके, उनकी मैरिज होती है। एलिगेशन ये है कि मैरिज होती है 2009 में और उनके वेडलॉक से एक बेटा पैदा होता है। कुछ दिनों के बाद जो लॉर्डशिप ये हस्बैंड जो है अंकुश का जो है बिहेवियर उसके प्रति चेंज हो जाता है। किसका? हस्बैंड का? हस्बैंड अंकुश, और उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो हैरेस करने लगता है पत्नी को कंप्लेनेंट को, और वो मारपीट करता है। तो 2018 में जो वाइफ जो है वो अलग रहने को मजबूर हो जाती है और डिसाइड करती है सेपरेट रहती है। हस्बैंड भी गवर्नमेंट टीचर है और वाइफ भी गवर्नमेंट टीचर है। फिर आफ्टर ये सेकंड मैरिज करता है 2021 में लॉर्डशिप। 2021 से पहले इन्हें कंप्लेनेंट ने 2 लीगल नोटिस दी हैं, A1 और A2। वो कंप्लेनेंट केवल हस्बैंड अंकुश उइके के नाम पे हैं और अपने स्त्री धन वापस पाने के लिए केवल, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। जो दूसरा नोटिस है वो 22/7/2021 का है और सेकंड मैरिज इनकी हुई थी, सेकंड मैरिज अंकुश ने किया है 21/5/21 को। 21/5/21 के बाद 22/7/21 का जो नोटिस है उसमें उसके एलिगेशन देख लें सर। ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है ये एक मदर है, 76 ईयर ओल्ड है लॉर्डशिप, इज सफरिंग फ्रॉम वेरियस ओल्ड एज डिसीज। इसमें कंप्लेंट क्या है सर? कंप्लेंट यही है लॉर्डशिप की जो उनका स्त्री धन है वो वापस किया जाए। कर दीजिए ना, काहे लड़ रहे हो? वो स्त्री धन सर हस्बैंड के पास है, हस्बैंड इसमें पार्टी। हस्बैंड आपका कौन है? हस्बैंड ये जो
इसका जो हस्बैंड आपका कौन लगता है? जो एप्लीकेंट नंबर 3 है, पाचेबाई है, इसका बेटा है और ये सिस्टर है और ब्रदर इन लॉ हस्बैंड। तो आपको अपने बेटे और भाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है? ये जीजा है लॉर्डशिप, ये बहन है। भाई अपने रिश्तेदारों को मुकदमा लड़वा के प्रसन्न है, रिश्तेदार अपने बेटे और भाई से स्त्री धन नहीं लौटवा सकते, ऐसा कर रहे हो क्या? ये आपका डिफेंस है इसमें। हमारे खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं, इनका कंप्लेन देख लीजिए। हाँ, कंप्लेंट दिखाइए। A3 है। पूरा लिखा पैराग्राफ 7 में सर? जी 7 से पढ़ देते। आप बता दीजिए सर। यह कि वादी आवेदिका के परिवार के एवं अन्य रिश्तेदार प्रतिवादी अनावेदक टीका रस्म अदायगी टीका लगाने हेतु गए थे। रस्म अदायगी के समय प्रतिवादी अनावेदक को एक सोने की चैन, 530 ग्राम वजन की एक सोने का छल्ला, 5 ग्राम वजन का 2 घड़ी सोनाटा की एवं नकदी 2100 रुपये प्रतिवादी अनावेदक दिए थे। यह सभी सामान वादी आवेदिका प्रतिवादी अनावेदक प्राप्त करने की अधिकारी है कि विवाह के समय वादी। आप कैसे कह रहे हो कि आपके बेटे के पास है? इसने तो लिखा है सबके पास है। ये तो आपका डिफेंस हो गया कि आपके बेटे को जो नंबर 1 है, नंबर 2 आपका डिफेंस हो गया ना सर। ये जो इसके बहनोई हैं और बहन है, ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं और दूसरी जगह रहते हैं। ये आठनेर में स्त्री धन है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये इनका जो वो है, इनके ऊपर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लड़ सकते। यार कोई जेल भेज रहा है आपको स्त्री धन के है, आपने स्त्री धन का रखा हुआ है, इसमें स्पेसिफिक एलिगेशन की क्या बात है? 494 का जो है उसमें हमारा क्या रोल है ये सर? इसमें कोई वो नहीं है कि उसमें हमने कैसे हेल्प। ये कंप्लेंट फाइल हुई है जी, इसका कॉग्निजेंस ले लिया गया क्या? कॉग्निजेंस ले लिया। ऑर्डर कौन सा है? P5 जी। इसमें 9 लोगों के खिलाफ था। एक सेकंड, पेज 22। एक सेकंड। कन्हैया लाल एवं अंकुश की बहन वंदना के द्वारा धारा 494 होते हैं। अतः प्रकरण का अभ्युत क्रमांक 1 क्रमशः की पंचों के वंदना के विरुद्ध धाराओं में किया जाता है। अच्छा, आप अपने बेटे की शादी में डांस किए थे कि नहीं किए थे? दूसरी शादी में? ये हमारा मेडिकल डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। हम 76 साल के हैं और ये इसको स्लिप डिस्क हो गया है। आजकल तो आप वीडियो देखो यूट्यूब में, तो आजकल तो बुजुर्गों के ज्यादा आ रहे हैं। जी, ये 8 देख लें लॉर्डशिप, ये इसका ऑपरेशन हुआ है। क्या कैसे क्वेश करूं मैं? मुझे ये बताइए सर। सारी संवेदनाएं, सारी सहानुभूति आपके साथ। मुझे कानून बताइए कि मैं कर सकता हूँ। उसके खिलाफ बनता है लॉर्डशिप, हस्बैंड के खिलाफ, लेकिन इनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। सर जैसी बहस करोगे फिर वैसा सीधा ऑर्डर आएगा। सर हस्बैंड के खिलाफ बनता है, सबके खिलाफ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कोई कानून नहीं बताएंगे। और सिर्फ इसमें जो है ना भाई साहब, ये बहस क्या, जैसा आप बोलोगे वैसे ही लिख दूंगा मैं भी। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे कौन से जजमेंट्स हैं जिसकी मदद से आप अपने पक्षकार को बचा सकते हो, वो बताइए। अब ये मत कहना सर आपको अब क्या दिया दिखाएं। इसमें जो कंप्लेंट फाइल है लॉर्डशिप, इसमें एक और लिखना है कि 202 में इनको विटनेस लिस्ट भी साथ में देनी चाहिए थी। 202 का जो वो है उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है। तो सर 202 में कौन सा गवाह इस्तेमाल, कौन से गवाह की गवाही कराई सर 202 में? ये इनने कराई है, अभी तो कंप्लेनेंट की कराई है। वो तो 200 में हुई ना जी। तो 202 की लिस्ट की बात उसमें ये कंपल्सन है कि 202 की जब उसने गवाही नहीं करवाई तो क्यों कंपल्सन है सर? लिस्ट तो उसके भाई साहब, पिटाई उसकी हुई, दहेज उसका, स्त्री धन उसकी गई, तो वो तो विटनेस है ना। तो 200 क्या भी गवाही की लिस्ट देनी पड़ेगी क्या 200 के लिए भी? दूसरा पुलिस से कोई वो नहीं मांगा, रिपोर्ट की मजबूरी है क्या, आवश्यक है क्या?
वेरीफाई करने के लिए घटना जो आवश्यक है क्या, ये बताइए। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि बिना पुलिस रिपोर्ट के भी मैं इसका कॉग्निजेंस ले सकता हूं, तो क्या 202 में पुलिस इंक्वायरी करवाना जरूरी है क्या, ये प्रश्न है। उसमें सेटिस्फेक्शन जरूरी है, पर्याप्त आधार प्रकट होते हैं, ऐसा लिखा है अपने हाँ तो बताइए ना, पर्याप्त आधार का डेफिनेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है, फिर उसके हिसाब से अपना आर्गुमेंट डेवलप करो। सफिशिएंट ग्राउंड किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में डिफाइन हुआ है क्या? जजमेंट तो नहीं लाया सर। अब नहीं लाए तो फिर मैं क्या करूं सर? 1 वीक टाइम। नहीं सॉरी, In that situation, I want to withdraw also. 7221/2023. This application under Liberty to 482 of the RPC has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for the applicant seek permission of this court to withdraw this application with liberty to raise all possible defenses which may be available to the applicants in the trial. With the aforesaid liberty, the application is dismissed as withdrawn. Item number 68. Yes, Sony. None for the applicant even in the second round. Accordingly, the case is adjourned list after 8 weeks without any liberty to mention. $73. The challenge is to impugn order and P1. What had happened, the petitioners filed an application under 115 for correction of entries in the map. The SDO white order annexure P4 at page 17 hold that the proceedings appears to be under section 113, and accordingly I don't have the jurisdiction. The collector has the jurisdiction and forwarded the matter to the collector. Now the proceedings are pending before the collector. The order of the collector may kindly be seen page 21. Yes, sir. Not the collector had asked the concerned SDO to obtain a report and to forward it to the collector. Instead of the forwarding the report, the collector, the SDO white ordered it at 6/8/21 and is a P5. Himself again decided the matter and issue notice. और कलेक्टर क्या पेंडिंग है क्या? The collector decided the matter on merits. Thereafter, they appealed the respondents. चलो issue notice. I'm also saying that the status को क्या स्टेटस तो वैसे ही मेंटेन रहेगा, उसमें क्या status है? Status को with regard to possession. क्यों? Because our main application, the condition, the application. पक्षकार कौन है आपस में, भाई भाई ना कि नहीं? भाई भाई है कि नहीं? भाई भाई हैं तो सर होली आ रही है, डंडे की बजाय गुलाल लेके जाना, गले मिलना, जमीन जायदाद आपके साथ नहीं जाएगी, आपके लड़के बच्चों के लिए और झगड़े का घर है, आप यारी तो अपने भाईचारा बनाएंगे तो आप भी खुश रहेंगे। Item number 78, Sri Sachin Jain, Sri Kirtha, Sri MPS Rukra. What is your reply to the amendment application, sir? My lord, my reply is the same, my lord. Please see para 2 of the amendment application. Lord, I had made an objection that you are misrepresenting that the percentage is less than 10%. So they have sought this application for amendment, deleting that portion. And in this application also, they have made a false statement, Lord. Please see para 2, Lord. This is not fair on the part of the petitioner. Lord, please see para 2 का last line. उसने लिखा लेस देन 20%, मतलब 10% से तो ज्यादा अम्बी वाइन में हम बेचते हैं, पर 20% से कम है, फिर झूठ 38%।
I have filed document, and that is not, anyone can go and see, Lord, there's here civil line only, they are boldly selling, that is called Mahua. That Mahua I have filed copies. This is not proper, Lord. My humble request is that we have to be fair with the Honorable Court. Why you are giving this false statement? I have filed this document which shows that this Mahua is not said 38% later. फिर झूठ पे झूठ. So therefore I have given this application. Simple application that a person. सर अगर हमने ये अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया तो हम सो कॉल्ड झूठ को फिर डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे. ये तो उचित नहीं है ना. नहीं, क्या डिसाइड करना उचित नहीं है? या तो मेरे विद्वान मित्र इसको बोले कि भाई जो हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हमसे ये त्रुटि, एक और त्रुटि हो गई कि 20%, या तो बोलते हैं हम महुआ उसमें नहीं, अम्बीवान में नहीं बिकता, महुआ बिकता है, इट इज हैविंग 38% अल्कोहल. लॉर्ड, वी हैव टू बी फेयर. के जयराम की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैंने रेफर की है अपने उसमें. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्पष्ट रूप से दैट इफ यू आर मिसरिप्रेजेंटिंग देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ. that ruling, Lord, that I'll just read out that portion, Lord. It is so it should be a guiding आपकी बात सही है. अब किस शराब में कितना अल्कोहल होता है अब सचिन जैन जी अब कौन चख के बताएगा? पहले मतलब चखने की जरूरत नहीं, मैंने फोटो पेश करी है. अगर वो फोटो कहाँ दिखेगा? मैंने इट वाज ऑन अ लाइटर साइड. सर उसको जब तक ये कंट्रोवर्सी रिकॉर्ड पे नहीं आएगी मैं डिसाइड कैसे करूंगा? अगर हम उनके इतने बोल्डली लिखा हुआ फोटो में 38% अल्कोहल कंटेन्ड इन विंटेज महुआ लिकर. हाउ यू आर नॉट माय अपॉन राइवल? यू आर डेफिनेटली माय राइवल. वन है व्हाटएवर माय लॉर्ड में. सर वो कौन सा है बोतल का वो फोटो साहब के रिप्लाई के साथ, मेरे रिप्लाई के साथ पेज नंबर 44 में मैंने उस बोतल की फोटो खींच के पेश कर. मैंने बोतल खरीदी. I may be allowed to clear this confusion, my lord, which has been created, my lord. My lord, what has happened? I have applied for the license for opening a franchisee outlet of a particular wine shop, that is MB Wine Shop, my lord. Lord, which has been rejected on the ground that I am the site over on which I want to open the outlet, my lord. It is within 130 meters of the existing composite liquor shop. Now, my lord, what has happened, my lord? Herein, due to I admit, my it was a mistake on my part, my lord, that 10% amount, 10% alcohol that is mentioned, my lord. But as far as this application is concerned, my lord, this is for amendment. वो हमने 20% मेंशन किया है, उसको लिखा है कि 20% से लेस देन है, बिकॉज हमने माय इंटेंशन वाज नॉट टू मिसरिप्रेजेंट दिस ऑनरेबल कोर्ट. अच्छा, ये R5 में ये जो आपकी बोतल है, ऐसा रूपरा साहब बता रहे हैं, पेज 43, ये इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना लिखा है सर? 38% लिखा है सर. वो महुआ हेरिटेज लिखकर है, दैट इज डिफरेंट थिंग. मतलब मुझे नहीं पता है ये महुआ की हेरिटेज कौन सी लिकर होती है? वो हेरिटेज लिकर है. कौन सी होती है लिकर, मुझे बताइए. नो माय लॉर्ड, हेरिटेज. मैंने तो ये जरा ये हिस्ट्री चैनल और बाकी कई चैनल्स में देखा है कि साहब 200 साल पुरानी विस्की और 300 साल पुरानी विस्की, और वो लकड़ी के कंटेनर्स में रख देते हैं उसको, फिर वो जमीन में गाड़ देते हैं और वो 200 साल बाद निकालते हैं. ना विवेक डिस्क्रिप्शन मत कीजिए, मूड बता. समझ में आता है ये महुआ की कौन सी हेरिटेज विस्की है? सॉरी, लिकर. सर हेरिटेज लिकर द कंसेप्ट सर कंसेप्ट ये है सर, कंसेप्ट उसका हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बता दिया. My lord's vivid description is remarkable and we must appreciate. हमने वो चैनल्स भी बता दिए सर जहाँ पे देखा है. अब आप ये बताइए महुआ का, देखिए सर
महुआ का एक फूल होता है येलो से कलर का, है ना, प्योर वो लेमन कलर नहीं होता, येलो कलर होता है, थोड़ा सा एक सॉफ्ट सा होता है, पिलपिला टाइप का होता है, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उससे बनाई जाती है, ठीक है। इसमें कौन सा हेरिटेजनेस आ गई सर? सर दैट इज इसमें सर इसमें लिखा मतलब अनादि काल से चल रही है, क्योंकि देखिए हाँ सर इसमें ये जो स्टेट जो है वो एक पॉलिसी लाई। अरे आपने कहा कि ये वो हेरिटेज वाली महुआ में 38% है सर, इसका तो ऐसी कौन सी महुआ की लिकर है जो 200 साल के बाद निकाली जाती है सर, या 100 साल के बाद निकाल? हेरिटेज की बात करोगे तो हम 100-200 साल पे ही बात करेंगे। नो सर, उसका हेरिटेज से कंसेप्ट ये है कि जो आदिवासी अरे आदिवासी तो अनादिकाल से जो पीते आ रहे हैं वो वाली महुआ जिसमें 38% है, तो है तो फ्रेश ना? मतलब हाँ ये है फ्रेश है ना? होगी तो फ्रेश सर, यस फ्रेश है, तो जब आप खुद ही कह रहे हो कि सब ये तो 38% है। नो मतलब 38% हमारा कहना ये है कि हमारा जो आउटलेट है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एमबी वाइन, वाइन एंड हेरिटेज लिकर जो महुआ है, हेरिटेज लिकर जो महुआ है उसी का आपने जो लेबल लगाया है उस पे आपने एक लड़के को भूपू के साथ खड़ा दिखाया है कि वो खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इसमें अल्कोहल 38% है। सर दिस इज द फोटोग्राफ फाइल्ड बाय हिम। आई डोंट नो या तो फिर आप You can go to Ambi Wine Shop. Ambi Wine. My lord, what my respect, my lord में kindly। अरे आपको इसका जवाब रिजॉइंडर देना है सर, इसका रिजॉइंडर मैंने दे दिया है सर। क्या आपका क्या कहना है सर? इसका मेरा ये कहना है सर, हेरिटेज लिकर इज नॉट गोइंग टू बी सोल्ड एज पर माय एग्रीमेंट विद द मैन्युफैक्चरर, जो जिसने मुझे फ्रेंचाइजी दी है उनकी फ्रेंचाइजी के हिसाब से हमारे एग्रीमेंट में इट इज स्पेसिफिकली। मतलब आप पानी बेच रहे हो? हम सिर्फ वाइन बेचेंगे सर, एमबी की वाइन बेचेंगे। उसमें अल्कोहल कितना है? उसमें सर 20% से कम ही है सर। अच्छी बात है। और सर हेरिटेज लिकर ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी लड़की को भी बिजनेस में लाना चाहते हो? मतलब दैट इज आप एक अपनी लड़की जिसकी 21 साल की उम्र भी नहीं हुई है और अभी एलएलबी पढ़ रही है उसको भी बिजनेस में लाना चाहते हो? दैट रिगार्ड माय लॉर्ड आई डोंट हैड एनी नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट केस। नहीं अरे during the hearing my lord, when I saw that case was going on my lord, I just went outside, called him, sought instructions whether it has been done. No lord, that thereafter I got the knowledge, my lord, and I have scored in that is true my lord। तो वो बताइए कि वो ऐसा क्या है इसमें कि वो अपनी लड़की को भी बिजनेस में लाना चाहता है जिसकी अभी 21 साल की उम्र भी नहीं हुई है और उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है जबकि 21 साल की उम्र जरूरी है, और वो बच्ची जो अभी एलएलबी कर रही है उसको आप शराब के धंधे में धकेल रहे हो? हाँ my lord, that for that my lord I would क्योंकि in respect of that ये थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो। in respect of that my lord I don't had instructions my lord, but for what after listening to the arguments going on that case my lord, the instructions which I have sought my lord in that regard my lord, what I have got to know my lord that he has she has filed an application for obtaining license for any proper for the area of Gorakhpur, not from the एक 21 साल से कम उम्र की लड़की शराब का बिजनेस करना चाहती है और आर्ग्यूमेंट ये हो रहा था सब वो तो बेनामी है, धंधा तो हम करेंगे। यस दिस वाज द आर्ग्यूमेंट सर, वो लाइसेंस किसी के भी नाम से रहे सर, धंधा तो दूसरा करता है। Yes my lord, it was argued my lord, I was present at that time my lord। अरे यार अपनी छोटी सी लड़की को भी नहीं छोड़ा आपने, तो ऐसा क्या है सर इसमें? That is I would। तो जब आपकी बेटी गोरखपुर में कर सकती है तो इनको तो सिर्फ लोकेशन से प्रॉब्लम है ना, आप भी कोई दूसरा कुछ देख लो। My lord, what my respectful submission is my lord, हमारा जो हम जो वाइन शॉप के लिए मांग रहे हैं वो सिर्फ 10,000 रुपए की फीस के लाइसेंस फी के साथ होता है, एंड दैट इज बीइंग कल देखेंगे, वो अभी मूड साहब का बन गया है। 2498/2023 प्रेजेंस रखते होली के बाद ही देखते हैं। सर 30 मार्च हमारा जो अदरवाइज इट वुड परसों के लिए लगा दो, चलो आई एम ओब्लाइज्ड, परसों के लिए लगा दो, उसके बाद तो जजमेंट आ नहीं पाएगा परसों। आई एम होपफुल 1 तारीख को हम इंस्ट्रक्शंस कर देंगे। वैसे सर पॉलिसी वो वही कंटिन्यू कर रहे हैं और पॉलिसी में देखते हैं इट वाज ऑन लाइटर साइड, परसों लगा देते हैं। ऑर्डर तो आपको 1 तारीख को आ ही जाएगा। Best thing would be let them withdraw, Lord. My thing that this application for amendment should be withdrawn. Another application for amendment should be filed. In all fairness, because
I have made a statement of oath that all AMBI wine shops are selling this heritage Mahua containing 38%. This is included in their license. And Lord, when I am selling more liquor, Lord, I am paying extra in addition to the 17 crore rupees. I am paying extra. So therefore, government is also with me because when I sell, I give them extra money also. So in fact, this is my extra money मतलब under मतलब the जितना मेरा The tender cost with the state government to the original license is in crores. Now he want to enjoy that facility in 10,000 rupees. नहीं वो तो ठीक है, ये 10,000 की पॉलिसी कौन लेके आया है? 10,000 की पॉलिसी तो लेके गवर्नमेंट ही आई। ये एक्स्ट्रा मनी मैं समझा नहीं, अंडर द टेबल होती है क्या? नहीं, हाँ। ओरिजिनल लाइसेंस वो एक्चुअली एरिया वो तो लाइसेंस है, उसमें एक्स्ट्रा मनी क्या होती है? नहीं, इनके दोनों के कंपैरिजन में अच्छा चलो ठीक, लाइसेंस चलो परसों के लिए लगा। सर ये पॉलिसी It is already 5:18 p.m. and the hearing of the case is not possible accordingly list on परसों के लिए। रिक्वेस्ट वाले सर, रिक्वेस्ट में अगर बहुत ही ज्यादा कुछ आज ही होना तो कर दीजिए, अदरवाइज नहीं तो उनको कल ले लेते हैं सारे। आइटम नंबर 60 में आज तक का स्टे है, आज तक का टेस्ट सर इसमें एक सेकंड सर, वो स्टे जो है 22-24 को, कोई बात नहीं सर। इसमें वैसे ये सर 60 नंबर में कोई है क्या? My lords, I am appearing for the state, my lords. I आपका seek क्या? 4 weeks time to file response in the matter. अच्छी बात है। 3323/2024 श्री M.L. शर्मा, श्री रोहित जैन, श्री जैन प्रेस वारंट इज ग्रांटेड फॉर द टाइम ऑफ appearing in R5 in this matter. अच्छा, तो R5 के लिए साहब के लिए लगा देंगे। प्रेस वारंट इज ग्रांटेड 4 weeks टाइम टू फाइल रिटर्न। आपका भी रिटर्न फाइल करना, दोनों के लिए कर दीजिएगा। List after 4 weeks, interim order passed on 22nd of February 2024 shall continue till next date of listing. Sure. और कुछ है? I need request item number 97. We are seeking permission that CBSE matter lottery. My next exam is on 23rd March of it. So इसको कल के लिए कर लो। मेरा आइटम नंबर 1 एक मिनट, मेरे रीडर नोट भी तो कर ले, फिर पता चला कोई फाइल छोड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। हो गया? हाँ जी। Item number 106, requested by the respondent. Madam, I am saying it may kindly be taken first week of April or. My lord, in this case, my lord, the stay order has been passed by the honorable. कल के लिए कर देते हैं, कल के लिए कर देते हैं 106 को भी। मतलब कल हम नहीं है आउट ऑफ। सर वो ऑपोज कर रहे हैं, नहीं तो फिर अभी सुनना पड़ेगा, तो मैं सुन लूंगा, कोई इशू नहीं। आइटम नंबर 96। अरे भाई साहब, एक का तो झगड़ा खत्म करूं। फ्राइडे के लिए माइलर नहीं, फ्राइडे के लिए ठीक है, इसको परसों के लिए कर दो। 106 को इंटरिम ऑर्डर शैल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग ओनली। आइटम नंबर 96 भी रिक्वेस्ट में था। क्या करना है सर? टॉप ऑफ द लिस्ट कल के लिए रख, इसको टॉप ऑफ द लिस्ट कर देना। टॉप ऑफ लिस्ट में स्पेशल भी 96 It shall be taken up at 10:15 a.m. irrespective of the serial number at which it might be listed in the cause list. जी 96 में क्या करना है? कल के लिए लग रही है, कल के लिए रख दीजिए। अरे आज ही कर दो अब तो। I'm saying 90 Sir, though. Mr. Paritosh Trivedi made a request in the morning. कल के लिए? No, I had a discussion with him. He said that if the court can take it on 2nd of April, my lords, but then now his He's asking junior for has some tomorrow. other instructions. Because in this case, my lords, I have already filed my reply today for करना क्या ये बताओ? सर 2 तारीख को मेरे से रिक्वेस्ट करी हैं? लिस्ट फॉर टुमारो। कल के लिए करना, चलो कल के लिए करो। It shall be taken up at 3:30 p.m. आइटम नंबर 40 माय लॉर्ड इज कुछ नहीं मालूम आप लोगों को है? उनको मालूम है पारितोष सर वाज नोइंग ऑल दीस फैक्ट्स। इसमें उनका क्या? चलो कल के लिए सिंपल रख दो, उसका क्या जी। आइटम नंबर 40 टॉप ऑफ द लिस्ट में है 40 माय लॉर्ड 40 जी सर। इट मे बी टेकन ऑन टुमारो माय लॉर्ड टॉप ऑफ। चलो इसको कल कर दीजिए सर। मैंने वैसे ही कहा है कि रिक्वेस्ट में बाय डिफॉल्ट कल कर देंगे, अगर आपको कल नहीं चाहिए तो रिक्वेस्ट कीजिए। 87 is also requested by the petitioner. My request is, my lord, in the last order actually record was called, my lord, it's not available. रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है My lord, so क्या रिकॉर्ड tomorrow सर? it won't be possible, my lord, to bring, so my lord
a week's time can be given so that I will send the requisition, my lord. अच्छा 5123/2022 Shri Vinay Singh Baghel, Shri Golani prays for and is granted last opportunity of 1 week to comply the order dated 3/11/2022. It is made clear that in case if the record is not produced, then SDO कहाँ का है sir? SDO, my lord, district author. नहीं तहसीलदार कहाँ का है? इस तहसीलदार is my lord, इस Theothar Riva shall remain present to explain as to why the record is not being used. Respondent number 3 के लिए साहब के लिए लगा देना, ये 1 तारीख के लिए लगा दीजिए। सर 61 नंबर है, इसमें भी रिकॉर्ड नहीं आया एसडीओ की कोर्ट का सर, तो 1 अप्रैल में कर दें, उसको पॉजिटिव आ जाए। 613860/2024 श्री दिनेश उपाध्याय काउंसिल फॉर द पिटिशनर। रिकॉर्ड नहीं आया अभी। रिकॉर्ड वहां से एसडीओ का रिकॉर्ड आना, इलेक्शन पिटीशन का रिकॉर्ड आना है। इलेक्शन पिटीशन का रिकॉर्ड ऑर्डर है सर। आया क्या? स्टेट इज नॉट अ पार्टी बट वो डायरेक्ट कोर्ट से नोटिस गया। अच्छा वो नहीं आया। It appears that the record of case number 4/A-89/2022-23 decided by respondent number 5 has not been received. Office is directed to send a reminder for this list in second week of April 2024. जी सुबोध जी। सर 62 नंबर था सर, आज के लिए फिक्स डेट थी हमदस्त की सर। अच्छा, Shri Subodh Pandey, counsel for the petitioner, none for the respondent. I am appearing for respondent number 1 and 2. Shri Rohit Jain for respondent number 1 and 2. You challenge the permit of 3 and 4. So, There is none for the respondents number 3 and 4. It is already 5:24 p.m. and none appears for the respondent number 3 and 4. Therefore, by way of last नहीं सर, उन्होंने लेने से मना कर दी सर। एफिडेविट ये फिर तो आपको भेजना पड़ेगा सर। आपका एफिडेविट कहाँ है सर? उसमें सेकंड पेज में है सर। वहाँ पेश करने गए थे, सुबह परमिशन ली थी, तो उन्होंने ग्रीन पेज में एफिडेविट भोपाल से आया बन के, तो नहीं लेंगे सर, ऐसा जूनियर ने बताया था। एफिडेविट दिया सर कि 1 को 2 को सर्व हो गया सर, तो उसमें लगी हो पूरी पावती, 3 4 के वो लगा दिया सर। फिर तो सर वो भेजना पड़ेगा नोटिस सर। None for the respondent number 3 and 4. It is submitted by counsel for petitioner that the respondents number 3 and 4 have refused to take notice. Accordingly, issue notice to respondent number 3 and 4 by registered mode, payable within 3 working days. List notices are made returnable within a period of 3 weeks. List immediately. Sir, list on 16th of April 2024. जी सर, मेरा इसमें ये निवेदन था सर। मैं सर 31 तक का परमिट है सर, यदि मेरे को परमिशन दे, इसमें ये ऑब्जर्वेशन आ जाए कि हम सर ऑब्जेक्शन पे पिटीशन हैज बीन डिस्पोज ऑफ विद डायरेक्शन टू सेक्रेटरी आरटी कंसीडर माय ऑब्जेक्शन एंड पास द स्पीकिंग ऑर्डर लॉर्ड। सर एक बार उनको नोटिस इशू हुआ था, सर्विस नहीं हुआ है सर वो इनफिक्स सर 31 तक का परमिट हम क्या करें? पिटीशन हैज बीन रेंडर्ड। अब आप ये बताइए, उनको नोटिस इशू हुआ, सर्विस नहीं हो पाया, तो हम क्या करें सर उसको? सर मेन कंस्ट्रक्शन तो आरटी है सर, जिन्होंने परमिट सर जी नहीं, आप लोग हो जिन्होंने बस चलानी है सर। उसने मांगे ही वैकेंसी पे था, भैया ने आरटी सेक्रेटरी भैया ने दे दिया। नहीं, सेक्रेटरी आरटी साहब ने बदल दिया सर। हाँ भैया ने बदल दिया, वही तो कह रहा हूँ। ये जो भैयापन चलता है ना, वही प्रॉब्लम करता है सर। सेक्रेटरी आरटी ने बदल दिया। तो वो जी ये जो भैया है ना वहाँ पे, सर वो मेरे से निकल के सर आई एम नहीं वो, अरे किसी को भाई बोलना कोई बुरी बात है क्या? पर ये जो भाई साहब जो चलता है ना, वो बुरी बात है। इज्जत देना तो अच्छी बात है यार। आपने स्कूल में वो प्लेज नहीं ली होगी, हम सब हम सब भारतवासी भाई बहन हैं सर। उसमें नहीं सर, आप सच में तो नहीं करता हूँ सर। हमने इसमें प्रेयर भी की कि फादर के लिए हमको सुन लिया जाए सर। भाई सेकंड प्रेयर भी है सर। नहीं सर, चल
सर या इसको विड्रा कर लेते, आप ऑब्जर्वेशन करते सर कि यदि ये ऑब्जेक्शन पेश करते तो स्पीकिंग ऑर्डर पास कौन सा ऑब्जेक्शन सर? सर जो फर्दर परमिट के वो रिन्यूअल So and so it is submitted by counsel for the petitioner that says the respondent number 3 and 4 have refused to take. It is submitted that the respondents number 3 and 4 have refused to take HON'BLE's notice. Well, sister. Under these circumstances, it is prayed that since the temporary permit is only up to 31st of March 2024, and in case if the case is adjourned beyond the 31st of March 20, the case is listed on any date subsequent thereto, then therefore this petition would render infractions on 31st of March 2024. Under these circumstances, it is prayed that he may be permitted to withdraw this petition with liberty to raise objection in case if any further application is filed by the by any aspirant for grant of temporary permit. First, with a forced liberty, the petition is dismissed as withdrawn. The grant of liberty to raise objection should not be construed that the objection should be allowed, and the competent authority shall decide the objection if it is permissible only in accordance with law. With a forced observation, the petition is dismissed as withdrawn. Obligation.